भाई नीचे क्या चैट क्या चल रही है? कौन सी चैट? ये जो ये क्या है? नीचे ध्रुव चौधरी सरफेस लेक्चर वन। मेरे को तो नहीं दिख रहा है ये ऐसा सब कुछ। अरे उसको कैप्शन आ रहा होगा, क्या पता। हो नीचे सकता है। हटा रहे थे। पढ़ रहा है ध्रुव, पढ़ रहा है। ये किसका है? उसी चैप्टर का है अपने? हाँ, इन द सेंस कि अगर तेरे को आइगन समझना है तो तेरे को ये पूरी प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी। इसका थोड़ा सीन ऐसा है। बरोबर। मैं हम्म, तो अभी वही जो पुराना था वो रिवाइज करा है अभी तो। बरोबर। ये ना मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक देगा इसको, मैं कॉपीराइट दे देगा अपने यूट्यूब। बोल बोल। रिकॉर्ड कर रहा है। हाँ, देख। The तो fundamental rule. बोल बोल। आज अपना ये मैट्रिक्स तो खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा इन द सेंस कि अगर अपने ये आइगन देखने बैठेंगे है ना, इसकी पूरी प्लेलिस्ट, हम्म, तो इसके अंदर अपने को लगेगा मोटा मोटा 1-1.5 घंटा जैसा। ठीक है। तो 1-1.5 घंटा इसका पकड़ना और फिर आइगन के क्वेश्चन करना है। अगर आपने इतना कर लिया ना तो अपना ये मैट्रिसेस खत्म हो जाएगा। क्योंकि रुक जा, मेरे को देखने दे सिलेबस में। आई डोंट थिंक सो कि बाकी कुछ सिलेबस में है ऐसा काम का। कैले हैमिल्टन आखिर में। कैले हैमिल्टन अपने ने करा था थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा ही बाकी होगा। खाली इनवर्स ऑफ अ मैट्रिसेस बाकी है थोड़ा सा। हो जाएगा। ठीक है। Root of it all building block for linear algebra is the vector. So it's worth making sure that we're all on the same page about what exactly a vector is. You see, broadly speaking, there are three distinct but related ideas about vectors, which I'll call the physics student perspective, the computer science student perspective, and the mathematician's perspective. The physics student perspective is that vectors are arrows pointing in space. What defines a given vector is its length and the direction it's pointing. But as long as those two facts are the same, you can move it all around and it's still the same vector. Vectors that live in the flat plane are two-dimensional, and those sitting in broader space that you and I live in are three-dimensional. The computer science perspective is that vectors are ordered lists of numbers. For example, let's say you were doing some analytics about house prices, and the only features you cared about were square footage and price. You might model each house with a pair of numbers, the first indicating square footage and the second indicating price. Notice the order matters here. In the lingo, you'd be modeling houses as two-dimensional vectors, where in this context, vector is pretty much just a fancy word for list, and what makes it two-dimensional is the fact that the length of that list is 2. The mathematician, on the other hand, seeks to generalize both these views, basically saying that a vector can be anything where there's a sensible notion of adding two vectors and multiplying a vector by a number, operations that I'll talk about later on in this video. The details of this view are rather abstract, and I actually think it's healthy to ignore it until the last video of this series, favoring a more concrete setting in the interim. But the reason I bring it up here is that it hints at the fact that the ideas of vector addition and multiplication by numbers will play an important role throughout linear algebra. But before I talk about those operations, let's just settle in on a specific thought to have in mind when I say the word vector. Given the geometric focus that I'm shooting for here, whenever I introduce a new topic involving vectors, I want you to first think about an arrow, and specifically, think about that arrow inside a coordinate system, like the xy plane, with its tail sitting at the origin. This is a little bit different from the physics student perspective, where vectors can freely sit anywhere they want in space. In linear algebra, it's almost always the case that your vector will be rooted at the origin. Then, once you understand a new concept in the context of arrows in space, we'll translate it over to the list of numbers point of view, which we can do by considering the coordinates of the vector. Now, while I'm sure that many of you are already familiar with this coordinate system, it's worth walking through explicitly, since this is where all of the important back and forth happens between the two perspectives of linear algebra.
Focusing our attention on two dimensions for the moment, you have a horizontal line called the x-axis and a vertical line called the y-axis. The place where they intersect is called the origin, which you should think of as the center of space and the root of all vectors. After choosing an arbitrary length to represent one, you make tick marks on each axis to represent this distance. When I want to convey the idea of 2D space as a whole, which you'll see comes up a lot in these videos, I'll extend these tick marks to make grid lines, but right now they'll actually get a little bit in the way. The coordinates of a vector is a pair of numbers that basically gives instructions for how to get from the tail of that vector at the origin to its tip. The first number tells you how far to walk along the x-axis, positive numbers indicating rightward motion, negative numbers indicating leftward motion, and the second number tells you how far to walk parallel to the y-axis after that, positive numbers indicating upward motion, and negative numbers indicating downward motion. To distinguish vectors from points, the convention is to write this pair of numbers vertically with square brackets around them. Every pair of numbers gives you one and only one vector, and every vector is associated with one and only one pair of numbers. What about in 3 dimensions? Well, you add a third axis, called the z-axis, which is perpendicular to both the x and y axes, and in this case, each vector is associated with an ordered triplet of numbers. The first tells you how far to move along the x-axis, the second tells you how far to move parallel to the y-axis, and the third one tells you how far to then move parallel to this new z-axis. Every triplet of numbers gives you one unique vector in space, and every vector in space gives you exactly one triplet of numbers. Alright, so back to vector addition and multiplication by numbers. After all, every topic in linear algebra is going to center around these two operations. Luckily, each one's pretty straightforward to define. Let's say we have two vectors, one pointing up and a little to the right, and the other one pointing right and down a bit. To add these two vectors, move the second one so that its tail sits at the tip of the first one. Then, if you draw a new vector from the tail of the first one to where the tip of the second one now sits, that new vector is their sum. This definition of addition, by the way, is pretty much the only time in linear algebra where we let vectors stray away from the origin. Now, why is this a reasonable thing to do? Why this definition of addition and not some other one? Well, the way I like to think about it is that each vector represents a certain movement, a step with a certain distance and direction in space. If you take a step along the first vector, then take a step in the direction and distance described by the second vector, the overall effect is just the same as if you moved along the sum of those two vectors to start with. You can think about this as an extension of how we think about adding numbers on a number line. One way that we teach kids to think about this, say with 2 plus 5, is to think of moving 2 steps to the right, followed by another 5 steps to the right. The overall effect is the same as if you just took 7 steps to the right. In fact, let's see how vector addition looks numerically. The first vector here has coordinates 1, 2, and the second one has coordinates 3, negative 1. When you take the vector sum using this tip-to-tail method, you can think of a 4-step path from the origin to the tip of the second vector. Walk 1 to the right, then 2 up, then 3 to the right, then 1 down. Reorganizing these steps so that you first do all of the rightward motion, then do all the vertical motion, you can read it as saying, first move 1 plus 3 to the right, then move 2 minus 1 up. So the new vector has coordinates 1 plus 3 and 2 plus negative 1. In general, vector addition in this list of numbers conception looks like matching up their terms and adding each one together. The other fundamental vector operation is multiplication by a number. Now this is best understood just by looking at a few examples. If you take number 2 and multiply it by a given vector, it means you stretch out that vector so that it's 2 times as long as when you started. If you multiply that vector by, say, 1/3, it means you squish it down so that it's 1/3 the original length. When you multiply it by a negative number, like negative 1.8, then the vector first gets flipped around, then stretched out by that factor of 1.8. This process of stretching or squishing or sometimes reversing the direction of a vector is called scaling. And whenever you catch a number, like 2 or 1/3 or negative 1.8, acting like this, scaling some vector, you call it a scalar. In fact, throughout linear algebra, one of the main things that numbers do is scale vectors, so it's common to use the word scalar pretty much interchangeably with the word number. Numerically, stretching out a vector by a factor of, say, 2 corresponds with multiplying each of its components by that factor, 2. So in the conception of vectors as lists of numbers, multiplying a given vector by a scalar means multiplying each one of those components by that scalar. You'll see in the following videos what I mean when I say that linear algebra topics tend to revolve around these two fundamental operations, vector addition and scalar multiplication. And I'll talk more in the last video about how and why the mathematician thinks only about these operations, independent and abstracted away from however you choose to represent vectors. In truth, it doesn't matter whether you think about vectors as fundamentally being arrows in space, like I'm suggesting you do, that happen to have a nice numerical representation, or fundamentally as lists of numbers that happen to have a nice geometric interpretation. The usefulness of linear algebra has less to do with either one of these views than it does with the ability to translate back and forth between them. It gives the data analyst a nice way to conceptualize many lists of numbers in a visual way, which can seriously clarify patterns in data and give a global view of what certain operations do. And on the flip side, it gives people like physicists and computer graphics programmers a language to describe space and the manipulation of space, using numbers that can be crunched and run through a computer. When I do mathy animations, for example, I start by thinking about what's actually going on in space
and then get the computer to represent things numerically, thereby figuring out where to place the pixels on the screen. And doing that usually relies on a lot of linear algebra understanding. So there are your vector basics, and in the next video, I'll start getting into some pretty neat concepts surrounding vectors, like span, bases, and linear dependence. See you then! ओके, तो देखो, इसमें तो इसने कुछ समझा नहीं है, ठीक है, इन द सेंस के ये वही है जो अपने को पता है, ठीक है, बस उसने एक बार क्लैरिफाई कर दिया है कि अपने अभी ये न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में नहीं जा रहे, अपने अभी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में जा रहे हैं, जो हम लोग बाद में इंटरचेंज करके दिखेंगे। अभी इसका चैप्टर 2 ही होगा शायद, यही ये थोड़ा है यार, लाइक इसके अंदर कुछ चीजें होंगी जो अपने को नहीं पता थी। In the last video, along with the ideas of vector addition and scalar multiplication, I described vector coordinates, where there's this back and forth between, for example, pairs of numbers and two-dimensional vectors. Now, I imagine the vector coordinates were already familiar to a lot of you, but there's another kind of interesting way to think about these coordinates, which is pretty central to linear algebra. When you have a pair of numbers that's meant to describe a vector, like 3, -2, I want you to think about each coordinate as a scalar, meaning think about how each one stretches or squishes vectors. In the xy coordinate system, there are two very special vectors. The one pointing to the right with length 1, commonly called I hat, or the unit vector in the x direction, and the one pointing straight up with length 1, commonly called j hat, or the unit vector in the y direction. Now, think of the x-coordinate of our vector as a scalar that scales I hat, stretching it by a factor of 3, and the y-coordinate as a scalar that scales j hat, flipping it and stretching it by a factor of 2. In this sense, the vector that these coordinates describe is the sum of two scaled vectors. That's a surprisingly important concept, this idea of adding together two scaled vectors. Those two vectors, I hat and j hat, have a special name, by the way. Together, they're called the basis of a coordinate system. What this means, basically, is that when you think about coordinates as scalars, the basis vectors are what those scalars actually, scale. There's also a more technical definition, but I'll get to that later. By framing our coordinate system in terms of these two special basis vectors, it raises a pretty interesting and subtle point. We could have chosen different basis vectors and gotten a completely reasonable, new coordinate system. For example, take some vector pointing up and to the right, along with some other vector pointing down and to the right in some way. Take a moment to think about all the different vectors that you can get by choosing two scalars, using each one to scale one of the vectors, then adding together what you get. Which two-dimensional vectors can you reach by altering the choices of scalars? The answer is that you can reach every possible two-dimensional vector, and I think it's a good puzzle to contemplate why. A new pair of basis vectors like this still gives us a valid way to go back and forth between pairs of numbers and two-dimensional vectors, but the association is definitely different from the one that you get using the more standard basis of I hat and j hat. This is something I'll go into much more detail on later, describing the exact relationship between different coordinate systems. But for right now, I just want you to appreciate the fact that anytime we describe vectors numerically, it depends on an implicit choice of what basis vectors we're using. So anytime that you're scaling two vectors and adding them like this, it's called a linear combination of those two vectors. ये वर्ड जो ना लीनियर कॉम्बिनेशन, ये अपने को किताब में थोड़ा सा दिखता रहेगा, तो इसको पकड़ लेना। इन द सेंस ये कुछ है नहीं, ये वही है, एडिशन ऑफ द वेक्टर को ये लीनियर कॉम्बिनेशन करके कुछ तो बोलते हैं। Where does this word linear come from? Why does this have anything to do with lines? Well, this isn't the etymology, but one way I like to think about it is that if you fix one of those scalars and let the other one change its value freely, the tip of the resulting vector draws a straight line. Now, if you let both scalars range freely and consider every possible vector that you can get, there are two things that can happen. For most pairs of vectors, you'll be able to reach every possible point in the plane. Every two-dimensional vector is within your grasp. However, in the unlucky case where your two original vectors happen to line up, the tip of the resulting vector is limited to just this single line passing through the origin. Actually, technically there's a third possibility too. Both your vectors could be 0, in which case you'd just be stuck at the origin. Here's some more terminology. The set of all possible vectors that you can reach with a linear combination of a given pair of vectors is called the span of those two vectors.
So restating what we just saw in this lingo, the span of most pairs of 2D vectors is all vectors of 2D space. But when they line up, their span is all vectors whose tip sit on a certain line. Remember how I said that linear algebra revolves around vector addition and scalar multiplication? Well, the span of two vectors is basically a way of asking what are all the possible vectors you can reach using only these two fundamental operations, vector addition and scalar multiplication. This is a good time to talk about how people commonly think about vectors as points. It gets really crowded to think about a whole collection of vectors sitting on a line, and more crowded still to think about all two-dimensional vectors all at once, filling up the plane. So when dealing with collections of vectors like this, it's common to represent each one with just a point in space. The point at the tip of that vector, where, as usual, I want you thinking about that vector with its tail on the origin. That way, if you want to think about every possible vector whose tip sits on a certain line, just think about the line itself. Likewise, to think about all possible two-dimensional vectors all at once, conceptualize each one as the point where its tip sits. So, in effect, what you'll be thinking about is the infinite flat sheet of two-dimensional space itself, leaving the arrows out of it. In general, if you're thinking about a vector on its own, think of it as an arrow. And if you're dealing with a collection of vectors, it's convenient to think of them all as points. So for our span example, the span of most pairs of vectors ends up being the entire infinite sheet of two-dimensional space. But if they line up, their span is just a line. The idea of span gets a lot more interesting if we start thinking about vectors in three-dimensional space. For example, if you take two vectors in 3D space that are not pointing in the same direction, what does it mean to take their span? Well, their span is the collection of all possible linear combinations of those two vectors, meaning all possible vectors you get by scaling each of the two of them in some way and then adding them together. You can kind of imagine turning two different knobs to change the two scalars defining the linear combination, adding the scaled vectors and following the tip of the resulting vector. That tip will trace out some kind of flat sheet cutting through the origin of three-dimensional space. This flat sheet is the span of the two vectors. Or, more precisely, the set of all possible vectors whose tips sit on that flat sheet is the span of your two vectors. Isn't that a beautiful mental image? So, what happens if we add a third vector and consider the span of all three of those guys? A linear combination of three vectors is defined pretty much the same way as it is for two. You'll choose three different scalars, scale each of those vectors, and then add them all together. And again, the span of these vectors is the set of all possible linear combinations. Two different things could happen here. If your third vector happens to be sitting on the span of the first two, then the span doesn't change. You're sort of trapped on that same flat sheet. In other words, adding a scaled version of that third vector to the linear combination doesn't really give you access to any new vectors. But if you just randomly choose a third vector, it's almost certainly not sitting on the span of those first two. Then, since it's pointing in a separate direction, it unlocks access to every possible three-dimensional vector. One way I like to think about this is that as you scale that new third vector, it moves around that span sheet of the first two, sweeping it through all of space. Another way to think about it is that you're making full use of the three freely changing scalars that you have at your disposal to access the full 3 dimensions of space. Now, in the case where the third vector was already sitting on the span of the first two, or the case where two vectors happen to line up, we want some terminology to describe the fact that at least one of these vectors is redundant, not adding anything to our span. Whenever this happens, where you have multiple vectors and you could remove one without reducing the span, the relevant terminology is to say that they are linearly dependent. Another way of phrasing that would be to say that one of the vectors can be expressed as a linear combination of the others, since it's already in the span of the others. On the other hand, if each vector really does add another dimension to the span, they're said to be linearly independent. ये तो टर्मिनोलॉजी है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, ये काम आएगी आई थिंक। इसको हमको कॉलेज में मैंने सुनी तो है, लेकिन कोई समझाता नहीं है इसको।
तो ये इसको है तो दिमाग सही में भाई, रखना है। बुक में थी अपने ने छोड़ दी थी। क्या? बुक में थी अपने ने जाने दिया था, आगे बढ़ गए थे वहां से। तो समझ में ही नहीं आएगा तो इंसान क्या करेगा? बुक में कौन अपने को वेक्टर खींच के बताएगा? So, with all of that terminology, and hopefully with some good mental images to go with it, let me leave you with a puzzle before we go. The technical definition of a basis of a space is a set of linearly independent vectors that span that space. Now, given how I described a basis earlier, and given your current understanding of the words span and linearly independent, think about why this definition would make sense. In the next video, I'll get into matrices and transforming space. See you then. अब जो जैसे अपने इस स्पेसिस के डेफिनेशन को देखते हैं, है ना, तो इसके अंदर अपने को कितने बेसिस मिल सकते हैं? डेफिनेशन में गलत किया है भाई, सही है। सही है, मैं पूछ रहा हूँ कितने बेसिस मिल सकते हैं एक 2D स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने पास कितने बेसिस हो सकते हैं? ये तक गया है मेरा। कितने हो सकते हैं? बोलो तो सही आराम से। अरे बेसिस का मतलब तू क्या बोला, कितने वेक्टर हो सकते हैं? डेफिनेशन पढ़ समझ। The basis of a vector space is a set of linearly independent vectors that span the full space. तो if तीन linearly independent vector है तो हम पूरे फुल स्पेस को एक्सेस कर सकते हैं। यानी फुल स्पेस की डेफिनेशन हम तीन linear independent वेरिएबल, तीन linear independent वेक्टर्स के साथ दे सकते हैं। मतलब उनका जो सम होता है स्केलर सम, उससे दे सकते हैं, बस यही। तो ऐसे कितने बेसिस हो सकते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। तो कितने सेट हो सकते हैं linearly independent, क्या पूछ रहे हैं? बेसिस कितने हो सकते हैं? बेसिस क्या है? देख, बेसिस क्या है? बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस, यानी कोई भी वेक्टर स्पेस का बेसिस क्या होता है? वो ऐसे लीनियर इंडिपेंडेंट का वेक्टर्स का सेट होता है जो पूरा स्पेस के एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट जो अपने को पूरा फुल स्पेस दे सकते हैं। तो ऐसे कितने लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर होते हैं जो पूरे स्पेसिस का अपने को एक्सेस दे सकते हैं? अरे लीनियर इंडिपेंडेंट यानी तीनों, एक तीनों में से कोई को हम स्केलर सम में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो कोई भी तीन लीनियर इंडिपेंडेंट होने चाहिए कि तीनों एक दूसरे के स्केलर वेक्टर सम नहीं, स्केलर नहीं। हम्म जैसे तो ऐसे कितने वेक्टर हो सकते हैं? अरे बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो हाँ, तो सकते हैं तीन बेसिस तो ऐसे वही तो बोल रहा इंडिपेंडेंट। हूँ कि बेसिस इनफाइनाइट होते हैं अपने। हाँ तो हाँ, अपने खाली अज्यूम कर लेते हैं कि मतलब अपने अपने कन्वीनियंस के लिए आई जे के लेते हैं। वो ऐसा बोल रहा है कि बेसिस हाँ इनफाइनाइट होते हैं। तो ये चीज अपने हाँ को हाँ, पकड़ के रखनी है ऐसा। ये चीज 12th में भी थी। 12th में? तरुण ने पढ़ाई थी, तरुण खंडेवाल ने, उसके वन हम्म, शॉट। उसने तो मेरे को सिर्फ नहीं बता लगता दिया इसने था तुम्हें ऐसा बताया कुछ। होगा, लेकिन इतना डिटेल में शायद ना बताया होगा। मेरे को हाँ इतना याद उसने नहीं सिर्फ है। बता दिया ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे और तुम्हें ये करना है कि तीन हम्म, वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं एक दूसरे वेक्टर का बताने के लिए। हम तो आईजे के यूज करते हैं। हम्म, कोई बात नहीं, चल। केवल है या सो गया? मैं भूख लगा। Hey everyone! If I had to choose just one topic that makes all of the others in linear algebra start to click, and which too often goes unlearned the first time a student takes linear algebra,
It would be this one: the idea of a linear transformation and its relation to matrices. For this video, I'm just going to focus on what these transformations look like in the case of 2 dimensions, and how they relate to the idea of matrix vector multiplication. In particular, I want to show you a way to think about matrix vector multiplication that doesn't rely on memorization. To start, let's just parse this term, linear transformation. Transformation is essentially a fancy word for function. It's something that takes in inputs and spits out an output for each one. Specifically, in the context of linear algebra, we like to think about transformations that take in some vector and spit out another vector. So why use the word transformation instead of function if they mean the same thing? Well, it's to be suggestive of a certain way to visualize this input-output relation. You see, a great way to understand functions of vectors is to use movement. If a transformation takes some input vector to some output vector, we imagine that input vector moving over to the output vector. Then to understand the transformation as a whole, we might imagine watching every possible input vector move over to its corresponding output vector. It gets really crowded to think about all of the vectors all at once, each one as an arrow. So, as I mentioned last video, a nice trick is to conceptualize each vector not as an arrow, but as a single point, the point where its tip sits. That way, to think about a transformation taking every possible input vector to some output vector, we watch every point in space moving to some other point. In the case of transformations in 2 dimensions, to get a better feel for the whole shape of the transformation, I like to do this with all of the points on an infinite grid. I also sometimes like to keep a copy of the grid in the background, just to help keep track of where everything ends up relative to where it starts. The effect for various transformations moving around all of the points in space is, you've got to admit, beautiful. It gives the feeling of squishing and morphing space itself. As you can imagine, though, arbitrary transformations can look pretty complicated. But luckily, linear algebra limits itself to a special type of transformation, ones that are easier to understand, called linear transformations. Visually speaking, a transformation is linear if it has 2 properties. All lines must remain lines without getting curved, and the origin must remain fixed in place. For example, this right here would not be a linear transformation, since the lines get all curvy. And this one right here, although it keeps the line straight, is not a linear transformation, because it moves the origin. This one here fixes the origin, and it might look like it keeps lines straight, but that's just because I'm only showing the horizontal and vertical grid lines. When you see what it does to a diagonal line, it becomes clear that it's not at all linear, since it turns that line all curvy. In general, you should think of linear transformations as keeping grid lines parallel and evenly spaced. Some linear transformations are simple to think about, like rotations about the origin. Others are a little trickier to describe with words. So how do you think you could describe these transformations numerically? If you were, say, programming some animations to make a video teaching the topic, what formula do you give the computer so that if you give it the coordinates of a vector, it can give you the coordinates of where that vector lands? It turns out that you only need to record where the 2 basis vectors, I hat and j hat, each land, and everything else will follow from that. For example, consider the vector v with coordinates -1, 2, meaning that it equals -1 times I hat plus 2 times j hat. If we play some transformation and follow where all 3 of these vectors go, the property that grid lines remain parallel and evenly spaced has a really important consequence. The place where v lands will be -1 times the vector where I hat landed, plus 2 times the vector where j hat landed. In other words, it started off as a certain linear combination of I hat and j hat, and it ends up as that same linear combination of where those 2 vectors landed. This means you can deduce where v must go based only on where I hat and j hat each land. This is why I like keeping a copy of the original grid in the background. For the transformation shown here, we can read off that I hat lands on the coordinates 1, -2, and j hat lands on the x-axis over at the coordinates 3, 0. This means that the vector represented by -1 I hat plus 2 times j hat ends up at -1 times the vector 1, -2, plus 2 times the vector 3, 0. Adding that all together, you can deduce that it has to land on the vector 5, 2. This is a good point to pause and ponder, because it's pretty important.
Now, given that I'm actually थोड़ा पीछे showing you the full transformation, you could have just looked to see that V. This is a good point to pause and जब वो ponder, because रोटेट it's करता है हम्म जब वो रोटेट करता है ना पूरे ग्रिड को अब से pretty deduce that it has to vector ends up at. This means that and j we can like keeping a copy of the based only on where I hat and j hat each land. This is why I भाई मेरा ऑडियो चल रहा है और वीडियो पॉज हो गया है इसका, है ना? हाँ तेरा ऑडियो चल रहा है वीडियो पॉज हो गया मेरे को तो दोनों दिख रहा है, अभी वीडियो नहीं दिख रहा। नहीं वैसा नहीं, वो यूट्यूब पे ऐसा सोचा हुआ था। वो जब फेस रोटेट करता है वहां से एग्जिट pretty important. अरे भाई और पीछे लगा पीछे हाँ हाँ वो बड़ा सा बम्प दिख रहा है ना वहां से हाँ वो बम्प मेरे जैसे लोगों के लिए V with coordinates -1, 2, meaning that it equals -1 times I hat plus 2 times j hat. If we play some transformation and follow where all three of these vectors go, the property that grid lines remain parallel and evenly spaced has a really important consequence. The place where V lands will be -1 times the vector where I hat landed plus 2 times the vector where j hat landed. In other words, it started off as a certain linear combination of I hat and j hat, and it ends up as that same linear combination of where those two vectors landed. This means you can deduce where V must go based only on where I hat and j hat each land. This is why I like keeping a copy of the original grid in the background. For the transformation shown here, we can read off that I hat lands on the coordinates 1, -2, and j hat lands on the x-axis over at the coordinates 3, 0. This means that the vector represented by -1 I hat plus 2 times j hat ends up at -1 times the vector 1, -2 plus 2 times the vector 3, 0. Adding that all together, you can deduce that it has to land on the vector 5, 2. This is a good point to pause and ponder, because it's pretty important. Now, given that I'm actually showing you the full transformation, you could have just looked to see that V has the coordinates 5, 2. But the cool part here is that this gives us a technique to deduce where any vectors land so long as we have a record of where I hat and j hat each land, without needing to watch the transformation itself. Write the vector with फुल more स्क्रीन general हम्म फुल स्क्रीन कर दे coordinates x and y, and it will land on x times the vector where I hat lands, 1, -2, plus y times the vector where j hat lands, 3, 0. Carrying out that sum, you see that it lands at 1x plus 3y, -2x plus 0y. I give you any vector, and you can tell me where that vector lands using this formula. What all of this is saying is that a two-dimensional linear transformation is completely described by just 4 numbers, the 2 coordinates for where I hat lands and the 2 coordinates for where j hat lands. Isn't that cool? It's common to package these coordinates into a 2x2 grid of numbers, called a 2x2 matrix, where you can interpret the columns as the 2 special vectors where I hat and j hat each land. If you're given a 2x2 matrix describing a linear transformation and some specific vector, and you want to know where that linear transformation takes that vector, you can take the coordinates of the vector, multiply them by the corresponding columns of the matrix, then add together what you get. This corresponds with the idea of adding the scaled versions of our new basis vectors. Let's see what this looks like in the most general case, where your matrix has entries A, B, C, D. And remember, this matrix is just a way of packaging the information needed to describe a linear transformation. Always remember to interpret that first column, AC, as the place where the first basis vector lands, and that second column, BD, as the place where the second basis vector lands. When we apply this transformation to some vector xy, what do you get? Well, it'll be x times AC plus y times BD. Putting this together, you get a vector ax plus by, cx plus dy.
You could even define this as matrix vector multiplication when you put the matrix on the left of the vector like it's a function. Then, you could make high schoolers memorize this without showing them the crucial part that makes it feel intuitive. और अभी पता चल रहा है ना ये क्या बोल रहा है? हाँ हाँ समझ में आ गया ना कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है? हाँ But isn't it more fun to think about these columns as the transformed versions of your basis vectors, and to think about the result as the appropriate linear combination of those vectors? Let's practice describing a few linear transformations with matrices. For example, if we rotate all of space 90 degrees counterclockwise, then I hat lands on the coordinates 0, 1. And j hat lands on the coordinates -1, 0. So the matrix we end up with has columns 0, 1, -1, 0. To figure out what happens to any vector after a 90-degree rotation, you could just multiply its coordinates by this matrix. Here's a fun transformation with a special name, called a shear. In it, I hat remains fixed, so the first column of the matrix is 1, 0. But j hat moves over to the coordinates 1, 1, which become the second column of the matrix. And at the risk of being redundant here, figuring out how a shear transforms a given vector comes down to multiplying this matrix by that vector. 2 मिनट हाँ। बे केवल तुझे क्या उल्लू उल्लू बनकर बैठा है? भाई ये वो सब बढ़िया लगता है। हटा दे ये सब। एक तो तेरा ऐसे अरे ही पीसी चलेगा भाई, खराब है। Let's इसमें say we क्या want to go देखो the क्या other लेना। way around, starting with a matrix, say with columns 1, 2, and 3, 1, and we want to deduce what its transformation looks like. Pause and take a moment to see if you can imagine it. बता भाई केवल भाई कहाँ जाएगा? उसने क्या बोला, क्या इमेजिन करना है? देखा इसलिए बोल रहा हूँ, ध्यान दे। ट्रांसफॉर्मेशन इमेजिन कर कि वो कहाँ से कहाँ जाएगा। इसको पूरा 90 रोटेट करना है। भाई ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये 1 2 3 1, ये अगर अपना आई हेड जे हेड ये बन जावे, आई हेड ये बन जावे, जे हेड ये बन जावे, तो वो ये जो स्पेस है वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, वो तुमको इमेजिन करना है। अच्छा हम्म, बता। मैं थोड़ा नींद में चल रहा हूँ, बता ना। तो फिर तेरा देखने का मतलब क्या है? बहुत ही हैवी चीज है यार, ऐसा नींद नींद में मत चल तू। देख, जैसे ये 1 2 लिखा है ना, तो ये क्या होगा, ये जो तेरा हाई हेड है इसका भी करंट है 1 0, ठीक है, ये 1 0 पर है, मतलब 0 1 पर है सॉरी। तो अरे यार 1 0 पर ही मैं थोड़ा भी, हाँ फिर देख, तो ये 1 2 पे हो जाएगा। तो इन द सेंस ये जो x है ना, ये तो 1 रहेगा, और ये जो इसका, एक मिनट, मेरा शायद है ना वो तुमको अलग दिख रहा होगा, x है ना, ये 1 पे रहेगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो ये जो स्पेस है ना, ये ऐसे है ना, ये ऐसे पहले ऐसे स्क्वीश होगी, ऐसे ऐसे अरे पेन नहीं यूज स्क्वीश कर सकते नहीं कर सकता मैं। उस पे, कर तो सकते स्क्रीन हैं। शेयर कर रहा है ना। अरे वो एनोएट नहीं कर सकते गूगल मीट पे, मैं स्क्रीनशॉट लेके और वो सब कर सकता हूँ। हाँ लेकिन मैं समझ गया तो क्या कहना था। हाँ मतलब वो 2 एरो बना दे फिर। वो ग्रीन वाला वो 2 पे ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे वो सारे। हाँ यानी ये है ना, ये उठ के इधर आ जाएगा पहले, तो One way ये to do पूरा this ऐसे is to स्क्वीश होगा। first move I hat
हाँ बिल्कुल, और जो 3 1 है ना, तो पहले वो ऊपर 3 बढ़ जाएगा, फिर 1 यानी उस तरफ 1 की तरफ ऐसे स्क्वीज होता है। तो ये थोड़ा सा घूमेगा, मस्त घूमेगा ये। hat to 1 2. Then move j hat to 3 1, always moving the rest of space in such a way that keeps grid lines parallel and evenly spaced. ये तो बहुत ही घुमा If भाई। the vector तो घूमेगा ही ना भाई, क्योंकि वो 3 पे जा रहा है, तो वो 3 पे जा रहा है। vectors that I hat and j hat land on are linearly dependent, which, if you recall from last video, means that one is a scaled version of the other, it means that the linear transformation squishes all of 2D space onto the line where those two vectors sit, also known as the one-dimensional span of those two linearly dependent vectors. ये पता चला ना क्या बता रहा है? ये वही मैं पूछने वाला, क्या बता रहा है, स्क्वीज कर दिया इन्होंने। नहीं देख, अगर कभी ये तेरा वेक्टर है, ठीक है, आई हैट और जे हैट, ठीक है, हम्म ये तू कभी ऐसे बता सकता है। ऐसे बता सकता, अच्छा ऐसे बता सकता हूँ। एक मिनट भाई। यानी ये मैट्रिक्स को एज एन वेक्टर में इसको ऐसे बता सकता हूँ, ये बोलना चाह रहा नहीं 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 भाई, रुक तो जा भाई तू। तो अभी मैं रफ रखता हूँ इसको। है। भाई मेरा वो वाला सही हो गया, ये पता है 1 नोट में मेरा जो होता था ना। अच्छा देख, जैसे कि अभी अपना आई हैट जे हैट है ना, उसको हम्म अपने कभी ऐसे कर दे 2 1 हम्म -2 1, इन द सेंस के तू अपने -1। आई को हाँ, यानी इन द सेंस के तू अपने आई को और जे को, जैसे मैं न्यू आई, उसको मैं आई डैश लिखता हूँ, आई डैश इज इक्वल्स टू के टाइम्स जे डैश, अगर तू ऐसे लिख सकता है ना, हम्म तो क्या होगा तो कि अपना जो 2D स्पेस है वो है ना रिड्यूस हो जाएगा 1D स्पेस में, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, जो अपना ट्रांसफॉर्म्ड आई हैट और जे हैट है, ये है लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये तो तेरे को पता है ना, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स का स्पैन जो होता है वो एक लाइन होती है, जो इसने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करा था। और लगता है लगता है केवल भाई मस्त सो रहा था भाई, अभी तक सो रहा था। तूने वो भी गलत ही लिखा है, 2 - 2 उसके बाद नीचे -1 है। हाँ, तो वो बता रहा है कि ये इसका जो है वो लाइन होगा और इसने नया वेक्टर लिया। अरे ले ना भाई, बस ना यार। ये बेसिकली ऐसा है ना कि ये जो मैट्रिक्स है वो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके दो वेक्टर है हाँ आई हाँ, और वही ये। वो तो उसने, ये सब उसने पहले बता दिया है कि हाँ, ये इसके पहले वीडियो में इसने बताया था। हम्म और इफ तुम जो वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे इसको, वो उसका बताएगा न्यू वेक्टर इस कोऑर्डिनेट हम्म, सिस्टम में। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद इतना सब कौन सोचेगा। वही तो भाई। अरे वो तुमको बता रहा है कि एक्चुअल में मैट्रिक्स जो है उसका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कैसा हो सकता है। तो अब तुमको हर बार ये सोचने की जरूरत नहीं है, पर इसका कुछ यूजफुल केसेस होगा तभी ये सब सिखा रहा है। अभी जैसे अभी तक हम्म अपन को कभी जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन जैसे ही अपना आइगन आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यू आएगा ना, तो ये सब का काम पड़ेगा। और केवल अगर तेरे को याद होवे तो अपने एफएआई का लेक्चर अटेंड कर रहे थे, तो वहां पे वो अपनी कौन सी तुम्हारी मैडम है, हेमांगिनी वेमांगिनी, तो वो आके चिल्ला रही थी कि मतलब ये आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमएल के अंदर बहुत काम आता है, इसके आज तुम जो भी एआई देखते हो उसके अंदर इसका बहुत यूज होता है। तो ये सही में इतना मैथमेटिक्स लगता है एआई को डिस्क्राइब करने में, उसके फंक्शंस डिस्क्राइब करने में। समझ भाई रहा है है, भाई? वो तो फिर पूरा मैथमेटिक्स है भाई। हम्म। ये पूरी दुनिया में मैथमेटिक्स। सही बात। To sum up, linear transformations are a way to move around space such that grid lines remain parallel and evenly spaced, and such that the origin remains fixed. Delightfully, these transformations can be described using only a handful of numbers, the coordinates of where each basis vector lands.
Matrices give us a language to describe these transformations, where the columns represent those coordinates, and matrix vector multiplication is just a way to compute what that transformation does to a given vector. The important takeaway here is that every time you see a matrix, you can interpret it as a certain transformation of space. Once you really digest this idea, you're in a great position to understand linear algebra deeply. Almost all of the topics coming up, from matrix multiplication to determinants, change of basis, eigenvalues, all of these will become easier to understand once you start thinking about matrices as transformations of space. Most immediately, in the next video, I'll be talking about multiplying two matrices together. See you then! अच्छा, तो अभी मैं तुमको एक चीज बताता हूँ कि अपना ये जो नेक्स्ट है, ये जो बताएगा कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लिकेशन करने से क्या होता है, ठीक है। तो वो कुछ नहीं होता है, वो ऐसा होता है कि तुम पहले एक मतलब तुम पहले एक ट्रांसफॉर्मेशन करो एंड देन उसके अंदर दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन करो। तो तुम दो ट्रांसफॉर्मेशन को एक साथ लिखने का जो मतलब तरीका है, उसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। दो ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट क्या आएगा? मतलब हाँ पहले ये वही, ट्रांसफॉर्मेशन किया फिर ये किया, हाँ क्या तो रिजल्ट? उसका उसका एक्चुअल रिजल्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन कैसा दिखेगा, तो वो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अपने वो वीडियो को स्क्रिप्ट मतलब स्किप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम के हिसाब से मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है। सही बात। हम्म, स्क्रीन शेयर करना भाई। 3 डायमेंशनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर 5 है, 3 डायमेंशनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। भाई उसको ये बनाने में कितना टाइम लगा होगा? वो पाइथन के स्क्रिप्ट से करता है, तो वो भी कभी 10 साल पहले बनाया उसने। हाँ, देखो अभी कभी मतलब टाइम तो लगता ही है, देख भाई अभी तो कंटेंट क्रिएशन कर रहा है तो टाइम तो लगता ही है, लेकिन उसने अपने कन्वीनियंस के लिए एक पाइथन की स्क्रिप्ट बनाई है जिसका नाम है मैनी। तो वो उसके हेल्प से करता है। तो मतलब तू सोच, एक बंदे ने पढ़ाने के लिए पूरी की पूरी पाइथन की स्क्रिप्ट बना दी। बहुत हैवी काम है भाई। एमआईटी का पढ़ा बंदा है शायद। हम कभी भाई। Lisa, where's my dad? Well, it should be obvious to even the most limited individual who holds an advanced degree in hyperbolic topology that Homer Simpson has stumbled into dramatic form. मतलब आसान भाषा में समझाएगा मेरे को? अभी क्या ये कहना ऐसी चाह भाषा है ना, रुक जा भाई, ये ना, भाई? उल्लू की आंखें क्यों बंद हो रही है? वो ये तू अपनी टोपोलॉजी। आंखें पल, हाँ जब तू अपनी आंखें झपकाएगा ना तो वो उसकी आंखें भाई झपकेगी। मेरी आंखें एकदम खुली है लेकिन फिर भी उसकी बंद है। वो थोड़ा सा भी मूवमेंट होता है ना, जैसे अपने पल के अपने को पता भी नहीं चलता और अपने झपकाते हैं। इतनी देर तो नहीं चिपकती भाई पर। ये देख ये देख। हाँ वो थोड़ा सा होता है ना भाई उसका, यानी उसका मैथमेटिकल फंक्शन अच्छा नहीं है। अभी तो सीएस का बंदा है ना, तो कर। बस देखो ये नहीं नहीं भाई मस्त है, बढ़िया सोने दे उल्लू को, आंख बंद कर दे। ऊपर बोले तो टोपोलॉजी क्या था? अबे टोपोलॉजी क्या भाई, मेरे को पूरा अच्छे से समझाया क्या कहना चाह रहा है। अभी तुम ये पढ़ो भाई। द इमेज फीचर्स अ फेमस कोट ऑफ द सिम्पसन्स। सिम्पसन्स तो पता है ना? हाँ क्या? हाँ, वो सिम्पसन्स। वो कॉमेडी शो ना। हाँ वो एक सिटकॉम है इन द सेंस। हाँ क्या बाहर का कॉमिक है क्या? हाँ हाँ हाँ। अमेरिका का है। इसलिए नहीं पता मेरे को। चल कोई नहीं, बता तो सही। ये सब तो छोड़ भाई, ये क्या, आगे बढ़ते। ये समझने नहीं बैठना है अभी अपने को। भाई वो समझ नहीं आ रहा है, ऊपर से ये समझने बैठ जाओ। तो उल्लू केवल बार जो बार उल्लू बन के मजे कर रहा है। मेरे को ऐसा पता लगता है ना कि किसी एमआईटी या आईआईटी के बंदे ने किया है, फिर बड़ा गंदा लगता है। क्या लगता है तेरे को? ऐसे बड़ा अच्छा नहीं लगता कि यार कोई नॉर्मल बंदा कुछ कर ही नहीं पा रहा। भाई तो वो एब नॉर्मल बंदा है तो एमआईटी में गया
हंस तो भाई, सीधी सी बात है। अरे देख, इसको मैं थोड़ा थोड़ा समझा, यानी ये क्या बोलना चाह रहा है कि मतलब वो सिम्पसन जो है ना वो 2D कार्टून है, कभी 2D कार्टून तो समझाने नहीं बैठना पड़ेगा ना क्या होता है। हाँ ठीक हाँ, है। तो अभी वो शायद है ना, वो उसका बेटी पूछ रही होगी लिसा कि मेरा पापा कहाँ गया, तो वो बोल रहा है कि वो चला गया थर्ड डायमेंशन में। ओ, Hey folks, I've got a relatively quick video for you today, just sort of a footnote between chapters. In the last two videos, I talked about linear transformations and matrices, but I only showed the specific case of transformations that take two-dimensional vectors to other two-dimensional vectors. In general throughout the series, we'll work mainly in two dimensions, mostly because it's easier to actually see on the screen and wrap your mind around. But more importantly than that, once you get all the core ideas in two dimensions, they carry over pretty seamlessly to higher dimensions. Nevertheless, it's good to peek our heads outside of Flatland now and then to, see what it means to apply these ideas in more than just those two dimensions. For example, consider a linear transformation with three-dimensional vectors as inputs and three-dimensional vectors as outputs. We can visualize this by smushing around all the points in three-dimensional space, as represented by a grid, in such a way that keeps the grid lines parallel and evenly spaced, and which fixes the origin in place. And just as with two dimensions, every point of space that we see moving around is really just a proxy for a vector who has its tip at that point. And what we're really doing is thinking about input vectors moving over to their corresponding outputs. And just as with two dimensions, one of these transformations is completely described by where the basis vectors go. But now, there are three standard basis vectors that we typically use: the unit vector in the x direction, I hat, the unit vector in the y direction, j hat, and a new guy, the unit vector in the z direction, called k hat. In fact, I think it's easier to think about these transformations by only following those basis vectors, since the full 3D grid representing all points can get kinda messy. By leaving a copy of the original axes in the background, we can think about the coordinates of where each of these three basis vectors lands. Record the coordinates of these three vectors as the columns of a 3x3 matrix. This gives a matrix that completely describes the transformation using only 9 numbers. As a simple example, consider the transformation that rotates space 90 degrees around the y-axis. So that would mean that it takes I hat to the coordinates 0, 0, -1 on the z-axis. It doesn't move j hat, so it stays at the coordinates 0, 1, 0. And then k hat moves over to the x-axis at 1, 0, 0. Those three sets of coordinates become the columns of a matrix that describes that rotation transformation. To see where a vector with coordinates x, y, z lands, the reasoning is almost identical to what it was for two dimensions. Each of those coordinates can be thought of as instructions for how to scale each basis vector so that they add together to get your vector. And the important part, just like the 2D case, is that this scaling and adding process works both before and after the transformation. So to see where your vector lands, you multiply those coordinates by the corresponding columns of the matrix, and then you add together the three results. Multiplying two matrices is also similar. Whenever you see two 3x3 matrices getting multiplied together, you should imagine first applying the transformation encoded by the right one, then applying the transformation encoded by the left one. It turns out that 3D matrix multiplication is actually pretty important for fields like computer graphics and robotics, समझ रहा है कि since things ये like rotations in three वही एक मतलब क्या करा इन्होंने, पहले एक जो आई कैप था उसमें उन्होंने बनाया, फिर जे कैप में बनाया, फिर के कैप में बनाया, ठीक है, और फिर उसके अंदर एक एक करके ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे थे। अरे ऐसा नहीं भाई, देख, अगर ये बात को बोला, मेरे को लगता है ना, तो ये भी इधर ही अटका हुआ है। कहाँ पे ये भी इधर ही है, हाँ बस रुक जा, अभी अच्छे से होता। ये है ना अभी शायद, अ, हाँ इधर ही अटका हुआ है। कर दे को जीरो। रिप्रेजेंट करने वाला ही बता रहा है। hat. In fact, I think it's easier to think about these transformations by only following those basis vectors, since the full 3D grid representing all points can get kinda messy.
By leaving a copy of the original axes in the background, वो we मेरे can में think हो नहीं about the रहा है coordinates of where each of इसमें। these three ये basis vectors आई lands. को जे में लेके गया। अरे इन द सेंस कि कभी अगर तू ट्रांसफॉर्म कर रहा है तो अपने हाँ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो यानी अपने क्या बोलते हैं कि अपने अपना बेसिस वेक्टर को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाते हैं, ठीक है, उसी को अपने बोलते हैं ना ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। हाँ। तो कभी अगर तू ट्रांसफॉर्म कर रहा है तो वहां पे ना हमको ट्रांसफॉर्मेशन डिस्क्राइब तो करना पड़ेगा ना। तो आई जो अपना पुराना आई होता है, जो अपने स्टैंडर्ड वापरते हैं, वो तो सबको पता ही होता है भाई। वो तो जैसे आई है तो वो 100 होने वाला है, जे है तो 010 होने वाला है, और के है वो 001 होने वाला है, ठीक है। तो इसके अंदर तो तुमको सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अभी अपने आई को ट्रांसफॉर्म करके दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, यानी अपने ने एक ट्रांसफॉर्मेशन करा, ठीक है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे होता है कि जिससे अपना आई कैप का वेक्टर दूसरी जगह चले जाता है। और वो कौन सी जगह जा रहा है उसका ये कोऑर्डिनेट है 10-1। जे कहाँ जा रहा है उसका वो कोऑर्डिनेट है 110। और के कहाँ जा रहा है 101। तो अभी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको तुमको एक ही बार में दिखाना है कि मतलब एक ही इंफॉर्मेशन, ये पूरी इंफॉर्मेशन को पैक करना है एक ही चीज में सब एक कि साथ। हम पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर रहे हैं। तो उसको तुम अपने एक मैट्रिक्स बना देते हैं 3x3 का। तो और उसके अंदर हमको उसको इंटरप्रेट ऐसे करते हैं कि फर्स्ट कॉलम होगा वो आई कैप बताएगा, सेकंड कॉलम जे कैप बताएगा, और थर्ड कॉलम के कैप बताएगा, जो ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स है उसकी, ठीक है। ये चीज है। अभी इतना समझ में आ गया तेरे को? हाँ इतना तो आ गया। हाँ। तो अभी वो आगे यही बता रहा है कि अपने जब मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स लिख रहे हैं तो अपने स्पेस को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और कभी अगर तेरे को कोई, अभी जैसे तूने ट्रांसफॉर्मेशन लिख दिया, अभी तेरे को एक पुराना वेक्टर था, ठीक है, पुराना कोई वेक्टर था, उसको ट्रांसफॉर्म करके अपने कभी दूसरी जगह पे लेके गए, तो उसका लोकेशन क्या होगा वो तेरे को कभी अगर जानना है तो वो पुराने मतलब ट्रांसफॉर्मेशन वाले मैट्रिक्स को उसके पुराने इनपुट मतलब उसके कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर देगा ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो वो तेरे को नवे वेक्टर का वो कोऑर्डिनेट दे देगा। वो होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन 3 डायमेंशन। Is almost identical to what it was for 2 dimensions. Each of those coordinates can be thought of as scaling corresponding यही columns of यही चीज कथन ने मेरे को पहले दिन बोली थी कि इनको क्लास में पूछा था कि एक वेक्टर को 3D स्पेस में रोटेट करेंगे तो उसके न्यू कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो उसने ऐसे ही मैट्रिक्स से सॉल्व किया था उन लोगों ने, तो मेरे को अजीब लगा था। यानी उन्होंने सॉल्व करा था? हाँ उन्होंने खुद ने। अच्छा, सारे स्टूडेंट ने? हाँ तो उसने पहले ही से पढ़ रखा था जेई एडवांस के लिए सारी चीजें। the matrix, and then you add together the 3 results. Multiplying 2 matrices is also similar. Whenever you see 2 3x3 matrices getting multiplied together, you should imagine first applying the transformation encoded by the right one, then applying the transformation encoded by the left one. It turns out that 3D matrices हाँ, ये मैंने तुमको जब स्किप करा था तब मैंने तुमको नहीं बताया था। ये ऐसा है ना, जैसे अपने अगर कभी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं, ठीक है, यानी अपने कभी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ऐसे लिखा हो, तो वो क्या कर रहे हैं कि जो लेफ्ट वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना वो सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो राइट वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसको अगर इसकी अगर कोई एनालॉजी दूं जो तुमको इजीली समझ में आवे तो ऐसा होता है कि एक सेकेंड। तो अपने ने पढ़ा था है ना कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। उसने बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं है, वो एक फंक्शन है, ठीक है, वो एक सॉर्ट ऑफ फंक्शन है जो इनपुट लेता है और कुछ कुछ करके आउटपुट देता है। तो करता वही है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब यही है। हम खाली ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड इसलिए वापरते हैं क्योंकि उसके अंदर मूवमेंट होती है, ठीक है। तो कभी अपने फंक्शन के बारे में भी सोचते थे तो कभी अपने ऐसे लिखते थे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो अपने अपने कैसे करते थे कि अंदर वाला पहले कैलकुलेट करते थे, फिर उसका जो रिजल्ट आता था वो दूसरे फंक्शन में रखते थे, ऐसा करते थे ना। तो इसके अंदर भी मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन में भी ऐसा होता है कि अगर कभी दो मैट्रिक्स इससे लिखी हुई है तो ये वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये फर्स्ट है,
और ये वाले जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सेकंड है। समझ में आया ना क्या बोल रहे हाँ। हैं? हाँ। Matrix multiplication is actually pretty important for fields like computer graphics and robotics, since things like rotations in 3 dimensions can be pretty hard to describe, but they're easier to wrap your mind around if you can break them down as the composition of separate, easier to think about rotations. Performing this matrix multiplication numerically is, once again, pretty similar to the 2-dimensional case. In fact, a good way to test your understanding of the last video would be to try to reason through what specifically this matrix multiplication should look like, thinking closely about how it relates to the idea of applying 2 successive transformations in space. In the next video, I'll start getting into the determinant. बढ़िया बढ़िया। तो मैं जब सुबह बैठा था ना तो मैं यहीं से देख रहा था डिटरमिनेंट। Hello again. So moving forward, I'll be assuming that you have a visual understanding of linear transformations and how they're represented with matrices, the way that I've been talking about in the last few videos. If you think about a couple of these linear transformations, you might notice how some of them seem to stretch space out, while others squish it on in. One thing that turns out to be pretty useful for understanding one of these transformations is to measure exactly how much it stretches or squishes things. More specifically, to measure the factor by which the area of a given region increases or decreases. For example, look at the matrix with columns 3, 0, and 0, 2. It scales I hat by a factor of 3 and scales j. एक मिनट आया आ रहा हूँ। अरे भाई 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 एक काम करता हूँ, मैं वीडियो ना चालू करके जाता हूँ, तुम लोग बैठ के देखना, ठीक है? Hat by मैंने a factor of थोड़ा 2. देखा हुआ है। Now, if we focus our attention on the 1 by 1 square whose bottom sits on I hat and whose left side sits on j hat, after the transformation, this turns into a 2 by 3 rectangle. Since this region started out with area 1 and ended up with area 6, we can say the linear transformation has scaled its area by a factor of 6. Compare that to a shear, whose matrix has columns 1, 0 and 1, 1, meaning I hat stays in place and j hat moves over to 1, 1. That same unit square, determined by I hat and j hat, gets slanted and turned into a parallelogram, but the area of that parallelogram is still 1, since its base and height each continue to have length 1. So even though this transformation smooshes things about, it seems to leave areas unchanged, at least in the case of that 1 unit square. Actually though, if you know how much the area of that one single unit square changes, it can tell you how the area of any possible region in space changes. For starters, notice that whatever happens to one square in the grid has to happen to any other square in the grid, no matter the size. This follows from the fact that grid lines remain parallel and evenly spaced. Then, any shape that's not a grid square can be approximated by grid squares pretty well, with arbitrarily good approximations if you use small enough grid squares. So, since the areas of all those tiny grid squares are being scaled by some single amount, the area of the blob as a whole will also be scaled by that same single amount. This very special scaling factor, the factor by which a linear transformation changes any area, is called the determinant of that transformation. I'll show how to compute the determinant of a transformation using its matrix later on in this video, but understanding what it represents is, trust me, much more important than the computation. For example, the determinant of a transformation would be 3 if that transformation increases the area of a region by a factor of 3. The determinant of a transformation would be 1/2 if it squishes down all areas by a factor of 1/2.
And the determinant of a 2D transformation is 0 if it squishes all of space onto a line, or even onto a single point, since then the area of any region would become 0. That last example will prove to be pretty important. It means that checking if the determinant of a given matrix is 0 will give a way of computing whether or not the transformation associated with that matrix squishes everything into a smaller dimension. You'll see in the next few videos why this is even a useful thing to think about, but for now I just want to lay down all of the visual intuition, which in and of itself is a beautiful thing to think about. Okay, I need to confess that what I've said so far is not quite right. The full concept of the determinant allows for negative values. But what would the idea of scaling an area by a negative amount even mean? This has to do with the idea of orientation. For example, notice how this transformation gives the sensation of flipping space over. If you were thinking of 2D space as a sheet of paper, a transformation like that one seems to turn over that sheet onto the other side. Any transformations that do this are said to invert the orientation of space. Another way to think about it is in terms of I hat and j hat. Notice that in their starting positions, j hat is to the left of I hat. If, after a transformation, j hat is now on the right of I hat, the orientation of space has been inverted. Whenever this happens, whenever the orientation of space is inverted, the determinant will be negative. The absolute value of the determinant, though, still tells you the factor by which areas have been scaled. For example, the matrix with columns 1, 1, and 2, negative 1 encodes a transformation that has determinant, I'll just tell you, negative 3. And what this means is that space gets flipped over and areas are scaled by a factor of 3. So why would this idea of a negative area scaling factor be a natural way to describe orientation flipping? Think about the series of transformations you get by slowly letting I hat get closer and closer to j hat. As I hat gets closer, all of the areas in space are getting squished more and more, meaning the determinant approaches 0. Once I hat lines up perfectly with j hat, the determinant is 0. Then, if I hat continues the way that it was going, doesn't it kind of feel natural for the determinant to keep decreasing into the negative numbers? So that's the understanding of determinants in 2 dimensions. What do you think it should mean for 3 dimensions? It also tells you how much a transformation scales things, but this time, it tells you how much volumes get scaled. Just as in 2 dimensions, where this is easiest to think about by focusing on one particular square with an area 1 and watching only what happens to it, in 3 dimensions, it helps to focus your attention on the specific 1 by 1 by 1 cube whose edges are resting on the basis vectors, I hat, j hat, and k hat. After the transformation, that cube might get warped into some kind of slanty cube. This shape, by the way, has the best name ever, parallelepiped, a name that's made even more delightful when your professor has a nice thick Russian accent. Since this cube starts out with a volume of 1, and the determinant gives the factor by which any volume is scaled, you can think of the determinant simply as being the volume of that parallelepiped that the cube turns into. A determinant of 0 would mean that all of space is squished onto something with 0 volume, meaning either a flat plane, a line, or, in the most extreme case, onto a single point. Those of you who watched Chapter 2 will recognize this as meaning that the columns of the matrix are linearly dependent. Can you see why? What about negative determinants? What should that mean for 3 dimensions? One way to describe orientation in 3D is with the right hand rule. Point the forefinger of your right hand in the direction of I hat, stick out your middle finger in the direction of j hat, and notice how when you point your thumb up, it's in the direction of k hat. If you can still do that after the transformation, orientation has not changed, and the determinant is positive. Otherwise, if after the transformation it only makes sense to do that with your left hand, orientation has been flipped, and the determinant is negative. So, if you haven't seen it before, you're probably wondering by now, how do you actually compute the determinant? For a 2 by 2 matrix with entries A, B, C, D, the formula is A times D minus B times C. Here's part of an intuition for where this formula comes from. Let's say that the terms B and C both happened to be 0. Then, the term A tells you how much I hat is stretched in the x direction, and the term D tells you how much j hat is stretched in the y direction. So, since those other terms are 0,
it should make sense that A times D gives the area of the rectangle that our favorite unit square turns into, kind of like the 3002 example from earlier. Even if only one of B or C are 0, you'll have a parallelogram with a base A and a height D, so the area should still be A times D. Loosely speaking, if both B and C are non-zero, then that B times C term tells you how much this parallelogram is stretched or squished in the diagonal direction. For those of you hungry for a more precise description of this B times C term, here's a helpful diagram if you'd like to pause and ponder. Now, if you feel like computing determinants by hand is something that you need to know, the only way to get it down is to just practice it with a few. There's really not that much I can say or animate that's going to drill in the computation. Okay, means hello determination. Hello. हाँ बोल। अरे यानी डिटर्मिनेंट यही है ना कि अपना एरिया एरिया। कितना स्क्वीज हो रहा है। हम्म। बढ़िया। एरिया कितना चेंज, ये हाँ तो वही। फ्लिप क्या? अरे मतलब नेगेटिव साइन बता रहे कि 2D में अपने फ्लिप कर दिया था, 3D में फ्लिपिंग है लेकिन अरे वो बोल रहा 2D है कि साइन एरिया नेगेटिव होता है ना, तो वो यानी कोई वेक्टर अगर आई के मान ले लेफ्ट साइड है, तो वो आई के फाइनल जब ट्रांसफॉर्म हुआ तो जे साइड आ गया, तो वो फ्लिप हो गया, ऐसा बोल रहा है, तो वो एरिया नेगेटिव आता है। बरोबर। अच्छा। और 3D के अंदर वो वॉल्यूम हो जाता है, वो वाला। हम्म अपने ने शायद फिजिक्स में सीखा भी था ना कि कोई भी हम्म। वॉल्यूम निकालते हैं तो लाइक बहुत कोई तो स्टार्टिंग में जब वो सर ने वो वीडियो लेक्चर भेजे थे ना, उसी में था। पैरालेलोलॉइड का कुछ तो था। पैरेलली हम्म एक हम तो आधा ही बोल पाते This हैं is भाई। पैरालेला कुछ तो था। all triply true for पैरेलल three-dimensional फाइव। determinants. बाकी तो There is a पैरेललो फाइव formula, बोल and if देते। you feel like that's something you need to know, you should practice with a few matrices, or, ये क्या है? छोटे ये छोटे तो सिर्फ मतलब बता क्यूब दे का रहा है छोटा ऐसे, छोटा यानी ऐसे पार्ट करके उसको फिर अपने जो करते हैं वो ऐसे ऐसा कुछ बता। मीटर निकालते कैसे वैसे बता रहा है, कुछ ज्यादा नहीं वो तो बता। अब निकालने में तो क्या ही है भाई, 2 साल से निकाल रहा हूँ मैं तो। go हाँ तो watch Sal बस वही Khan work बता। through a few. Honestly, though, I don't think that those computations fall within the essence of linear algebra, but I definitely think that understanding what the determinant represents falls within that essence. Here's kind of a fun question to think about before the next video. If you multiply two matrices together, the determinant of the resulting matrix is the same as the product of the determinants of the original two matrices. If you tried to justify this with numbers, it would take a really long time. But see if you can explain why this makes sense in just one sentence. यानी वो तो एरिया को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ना, तो वो तो मतलब इसमें समझाना क्या है? अगर तुम जियोमेट्रिकली अगर तुम समझोगे तो वही हो रहा है ना कि पहले वो एरिया इतना दबा, फिर वही एरिया इतना खींचा, दबा खींचा, दोनों में से कुछ भी हो रहा होगा। तो तुम पहले पहले एरिया को खींच लो या फिर पहले पहले स्पेस M1 को। को खींचो, एक बार दबाओ। उससे कोई फर्क M1 पड़ता M2 भी नहीं। तो वही ट्रांसफॉर्म कर दिया एरिया को, हम्म M1 into M2 वही होगा। Next up, I'll be relating the idea of linear transformations covered so far to one of the areas where linear algebra is most useful, linear systems of equations. See you then. As you can probably tell by now, the bulk of this series is on understanding matrix and vector operations through that more visual lens of linear transformations. This video is no exception, describing the concepts of inverse matrices, column space, rank, and null space through that lens. A forewarning though, I'm not going to talk about the methods for actually computing these things, and some would argue that that's pretty important. There are a lot of very good resources for learning those methods outside this series, keywords Gaussian elimination and row echelon form. I think most of the value that I actually have to add here is on the intuition half.
Plus, in practice, we usually get software to compute this stuff for us anyway. First, a few words on the usefulness of linear algebra. By now you already have a hint for how it's used in describing the manipulation of space, which is useful for things like computer graphics and robotics. But one of the main reasons that linear algebra is more broadly applicable and required for just about any technical discipline is that it lets us solve certain systems of equations. When I say system of equations, I mean you have a list of variables, things you don't know, and a list of equations relating them. In a lot of situations, those equations can get very complicated. But, if you're lucky, they might take on a certain special form. Within each equation, the only thing happening to each variable is that it's scaled by some constant. And the only thing happening to each of those scaled variables is that they're added to each other. So no exponents or fancy functions or multiplying two variables together, things like that. The typical way to organize this sort of special system of equations is to throw all the variables on the left and put any lingering constants on the right. It's also nice to vertically line up the common variables, and to do that you might need to throw in some zero coefficients whenever the variable doesn't show up in one of the equations. This is called a linear system of equations. You might notice that this looks a lot like matrix vector multiplication. In fact, you can package all of the equations together into a single vector equation where you have the matrix containing all of the constant coefficients and a vector containing all of the variables, and their matrix vector product equals some different constant vector. Let's name that constant matrix A, denote the vector holding the variables with a bold-faced X, and call the constant vector on the right-hand side V. बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है स्पेस का, ये नया वाला वेक्टर है, पुराना वेक्टर क्या था, कुछ ऐसा सही दिख रहा है ज्योमेट्रिकल कि पहले ये ट्रांसफॉर्मेशन है स्पेस का, ये नया वेक्टर है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, पुराना वेक्टर क्या था। हाँ, मतलब इसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, जिसमें से एक इंटरप्रिटेशन ये है कि पुराना मतलब हमने स्पेस को ऐसे ट्रांसफॉर्म कर दिया तो नया वेक्टर ये है, तो अपना ओरिजिनल वेक्टर क्या था, ऐसे कह सकते हैं। और बाद में ये अपने ने ये बैक एंड फोर्थ है, लाइक ये एक इंटरप्रिटेशन से दूसरे इंटरप्रिटेशन पे अपने ले गए, इससे अपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई लेना देना नहीं है। अभी वो चाहे अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि अपना एक्स वाई जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सब, वो बस एक है, लाइक ये अपने एक पर्सपेक्टिव से दूसरे पर्सपेक्टिव पे जंप कर रहे हैं। Notational trick to get our system of equations. क्या कर रहा है तू, सॉल्व करने बैठा है क्या? भाई ये हर बार कुछ बोलते बोलते चिल्ला क्यों जाता है? क्या उसको घर से बुलाया? चाय भाई पी रहा था अभी तक। कल चले written on one line. It sheds light on a pretty cool geometric interpretation for the problem. The matrix A corresponds with some linear transformation, so solving AX equals V means we're looking for a vector X, which, after applying the transformation, lands on V. Think about what's happening here for a moment. You can hold in your head this really complicated idea of multiple variables all intermingling with each other just by thinking about squishing and morphing space and trying to figure out which vector lands on another. Cool, right? To start simple, let's say you have a system with two equations and two unknowns. This means the matrix A is a 2 by 2 matrix, and V and X are each two-dimensional vectors. Now, how we think about the solutions to this equation depends on whether the transformation associated with A squishes all of space into a lower dimension, like a line or a point, or if it leaves everything spanning the full two dimensions where it started. In the language of the last video, we subdivide into the cases where A has zero determinant and the case where A has non-zero determinant. Let's start with the most likely case, where the determinant is non-zero, meaning space does not get squished into a zero area region. In this case, there will always be one and only one vector that lands on V,
and you can find it by playing the transformation in reverse. Following where v goes as we rewind the tape like this, you'll find the vector x such that a times x equals v. When you play the transformation in reverse, it actually corresponds to a separate linear transformation, commonly called the inverse of a, denoted a to the negative 1. For example, if a was a counterclockwise rotation by 90 degrees, then the inverse of a would be a clockwise rotation by 90 degrees. If a was a rightward shear that pushes j hat 1 unit to the right, the inverse of a would be a leftward shear that pushes j hat 1 unit to the left. In general, A inverse is the unique transformation with the property that if you first apply A, then follow it with the transformation A inverse, you end up back where you started. Applying one transformation after another is captured algebraically with matrix multiplication. So the core property of this transformation A inverse is that A inverse times A equals the matrix that corresponds to doing nothing. The transformation that does nothing is called the identity transformation. It leaves I hat and j hat each where they are, unmoved, so its columns are 1, 0 and 0, 1. Once you find this inverse, which in practice you'd do with a computer, you can solve your equation by multiplying this inverse matrix by v. And again, what this means geometrically is that you're playing the transformation in reverse and following v. This non-zero determinant case, which for a random choice of matrix is by far the most likely one, corresponds with the idea that if you have two unknowns and two equations, it's almost certainly the case that there's a single unique solution. This idea also makes sense in higher dimensions, when the number of equations equals the number of unknowns. Again, the system of equations can be translated to the geometric interpretation where you have some transformation A and some vector v, and you're looking for the vector x that lands on v. As long as the transformation A doesn't squish all of space into a lower dimension, meaning its determinant is non-zero, there will be an inverse transformation, A inverse, with the property that if you first do A, then you do A inverse, it's the same as doing nothing. And to solve your equation, you just have to multiply that reverse transformation matrix by the vector v. But when the determinant is zero, and the transformation associated with the system of equations squishes space into a smaller dimension, there is no inverse. You cannot unsquish a line to turn it into a plane. At least that's not something that a function can do. That would require transforming each individual vector into a whole line full of vectors. But functions can only take a single input to a single output. Similarly, for three equations and three unknowns, there will be no inverse if the corresponding transformation squishes 3D space onto the plane, or even if it squishes it onto a line or a point. Those all correspond to a determinant of zero, since any region is squished into something with zero volume. It's still possible that a solution exists even when there is no inverse. It's just that when your transformation squishes space onto, say, a line, you have to be lucky enough that the vector v lives somewhere on that line. You might notice that some of these zero determinant cases feel a lot more restrictive than others. Given a 3x3 matrix, for example, it seems a lot harder for a solution to exist when it squishes space onto a line compared to when it squishes things onto a plane, even though both of those are zero determinant. We have some language that's a bit more specific than just saying zero determinant. When the output of a transformation is a line, meaning it's one-dimensional, we say the transformation has a rank of 1. If all the vectors land on some two-dimensional plane, we say the transformation has a rank of 2. So the word rank means the number of dimensions in the output of a transformation. For instance, in the case of 2x2 matrices, rank 2 is the best that it can be. It means the basis vectors continue to span the full 2 dimensions of space, and the determinant is non-zero. But for 3x3 matrices, rank 2 means that we've collapsed, but not as much as they would have collapsed for a rank 1 situation. If a 3D transformation has a non-zero determinant and its output fills all of 3D space, it has a rank of 3. This set of all possible outputs for your matrix, whether it's a line, a plane, 3D space, whatever, is called the column space of your matrix.
You can probably guess where that name comes from. The columns of your matrix tell you where the basis vectors land, and the span of those transformed basis vectors gives you all possible outputs. In other words, the column space is the span of the columns of your matrix. So a more precise definition of rank would be that it's the number of dimensions in the column space. ये मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया, कोई समझाएगा? पीछे कर ले। For a determinant and its output fills all of 3D space, it has a rank of 3. This set of all possible outputs for your matrix, whether it's a line, a plane, 3D space, whatever, is called the column space of your matrix. You can probably guess where that name comes from. The columns of your matrix tell you where the basis vectors land, and the span of those transformed basis vectors gives you all possible outputs. मतलब ये तो तभी ट्रू होगा ना, कॉलम स्पेस बोलना तो तभी ट्रू होगा ना In जब other words, अपने बेसिस वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ, हम्म, सुन रहा हूँ। मतलब सही बोला ना और मैंने? वो स्पैन ऑफ कॉलम्स, यानी कॉलम स्पेस बोलना तभी सही होगा ना जब अपना कॉलम स्पेस बोलना तभी सही होगा जब अपना वो कॉलम में चला जाता हो, यानी अपना स्पैन कॉलम बन जाता हो, इन द सेंस के अपने बेसिस वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। लग तो सही रहा है। एक बार फिर से the पीछे columns कर ले। rank of 3. This set of all possible outputs for your matrix, whether it's a line, a plane, 3D space, whatever, is called the column space of your matrix. You can probably guess where that name comes from. The columns of your matrix tell you where the basis vectors land, and the span of those transformed basis vectors gives you all possible outputs. In other words, the column space is the span of the columns of your matrix. स्पैन ऑफ कॉलम्स, स्पैन कॉलम स्पेस ऑफ लाइक क्या बताना चाह रहा है? कॉलम्स, कॉलम स्पेस है? वही तो मैं समझ रहा हूँ भाई, वही तो मैं हाँ तुमसे तो पूछ रहा हूँ। स्पैन ऑफ कॉलम्स इन द सेंस के जो अपने कॉलम्स है आई कैप जे कैप, ठीक है, उस वो कितना घूम सकते हैं, समझ रहा है तू? उनकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, उसको शायद हम लोग बोल रहे हैं कॉलम स्पेस। कॉलम कौन से मतलब कॉलम किस स्पेस में रह सकता है उसे कह रहे हैं कॉलम स्पेस। जैसे आई कैप का जो कॉलम है वो कौन से स्पेस में, वो उसका स्पेस कितना है, वो कौन से स्पेस में रह सकता है, तो वो कॉलम स्पेस। जे कैप का तो जे कैप का अलग कॉलम स्पेस होगा, कुछ कुछ ऐसा बोल रहे So, a more एक precise स्पेस definition of rank हैं। स्पैन कॉलम्स तो यही था ना कि हम इस दो आई वेक्टर, ये जो हमारा पहले कॉलम है और दूसरी कॉलम है, उससे कितने वेक्टर्स तक रीच कर सकते हैं, उस दो वेक्टर से क्या हम पूरी 2D स्पेस को ले सकते हैं, तो वो उसका स्पैन था, वो मैट्रिक्स का स्पैन ऑफ कॉलम। स्पैन होता है। हाँ हाँ, तो वो मैट्रिक्स का स्पैन है, तो क्योंकि हाँ, मैट्रिक्स अब की वो बात चल रही कॉलम है। का भी तो एक स्पैन होगा ना। कॉलम का स्पैन कहना यानी जैसे मान ले तेरे पास एक आई कैप वेक्टर है, ठीक है, हम्म, तो अभी वो तो सिर्फ आई कैप वेक्टर को, से एक लाइन ही ले सकता है ना उससे। हाँ, तो वो जो लाइन हुई वो लाइन अपना बन गया कॉलम स्पेस ऑफ आई कैप। ऐसे ही जेब कैप का भी कॉलम स्पेस हाँ, तो होगा ये आई तभी गेस। ट्रू होगा जब आइडेंटिटी दोनों इंडिपेंडेंट हो, तभी हमें एक लाइन मिलेगी। लीनियरली डिपेंडेंट हो तभी लाइन मिलेगी, ऐसा बोल वो रहा था ना तो तो स्टार्टिंग।
वो अलग चीज है, वो अलग नहीं तो चीज है, बोल अभी रहा What था करने if देते लीनियरली the number of डिपेंडेंट है, हैं। लीनियरली डिपेंडेंट है तभी ये मैट्रिक्स एक लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा हाँ, वो स्पेस पूरा से। मैट्रिक्स लाइन में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे स्पैन ऑफ कॉलम्स बोला है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ कॉलम्स की बात करेंगे, मैट्रिक्स की बात नहीं करेंगे। तो ये थोड़ी चीज अलग है, आई गेस। जैसे 2 1 है, ठीक है, लिखा है 2 1, तो वो आई कैप जो भी होगा वो 2 1 वाली, जो 2 1 वाले वेक्टर्स की जो पूरी लाइन बनेगी, वही लाइन पे वो आई कैप रह सकता है, वो ऐसा बोल रहा है। डेफिनेशन ऐसी जाएगी कॉलम स्पेस की। dimensions in the शायद column हमने जल्दी space? रोक दिया और हम्म, बोलेगा मम्मी, हम्म। जल्दी रोक दिया हमने, वो और बोलेगा। When this rank is as high as it can be, meaning it equals the number of columns, we call the matrix full rank. Notice, the zero vector will always be included in the column space, since linear transformations must keep the origin fixed in place. For a full rank transformation, the only vector that lands at the origin is the zero vector itself. But for matrices that aren't full rank, which squish to a smaller dimension, you can have a whole bunch of vectors land on zero. If a 2D transformation squishes space onto a line, for example, there is a separate line in a different direction full of vectors that get squished onto the origin. If a 3D transformation squishes space onto a plane, there's also a full line of vectors that land on the origin. If a 3D transformation squishes all of space onto a line, then there's a whole plane full of vectors that land on the origin. This set of vectors that lands on the origin is called the null space, or the kernel of your matrix. It's the space of all vectors that become null, in the sense that they land on the zero vector. In terms of the linear system of equations, when v happens to be the zero vector, the null space gives you all of the possible solutions to the equation. So that's a very high-level overview of how to think about linear systems of equations geometrically. Each system has some kind of linear transformation associated with it, and when that transformation has an inverse, you can use that inverse to solve your system. Otherwise, the idea of column space lets us understand when a solution even exists, and the idea of a null space helps us to understand what the set of all possible solutions can look like. Again, there's a lot that I haven't covered here, most notably how to compute these things. I also had to limit my scope to examples where the number of equations equals the number of unknowns. But the goal here is not to try to teach everything, it's that you come away with a strong intuition for inverse matrices, column space, and null space, and that those intuitions make any future learning that you do more fruitful. Next video, by popular request, will be a brief footnote about non-square matrices. Then after that, I'm going to give you my take on dot products, and something pretty cool that happens when you view them under the light of linear transformations. See you then! देख भाई 10 बज गए, अभी तक अपने मेरी ये प्लेलिस्ट ही खत्म नहीं हुई। कितने कितने वीडियो बचे हैं? ये वीडियो नंबर 8 है ना, इसके अंदर 10 वीडियो है, 2 और है। Hey everyone, I've got another quick footnote for you between chapters today. When I've talked about linear transformation so far, I've only really talked about transformations from 2D vectors to other 2D vectors, represented with 2x2 matrices, or from 3D vectors to other 3D vectors, represented with 3x3 matrices. But several commenters have asked about non-square matrices, so I thought I'd take a moment to just show what those mean geometrically. By now in the series, you actually have most of the background you need to start pondering a question like this on your own, but I'll start talking through it just to give a little mental momentum. It's perfectly reasonable to talk about transformations between dimensions, such as one that takes 2D vectors to 3D vectors.
Again, what makes one of these linear is that grid lines remain parallel and evenly spaced, and that the origin maps to the origin. What I have pictured here is the input space on the left, which is just 2D space, and the output of the transformation shown on the right. The reason I'm not showing the inputs move over to the outputs like I usually do is not just animation laziness. It's worth emphasizing that 2D vector inputs are very different animals from these 3D vector outputs, living in a completely separate, unconnected space. Encoding one of these transformations with a matrix is really just the same thing as what we've done before. You look at where each basis vector lands and write the coordinates of the landing spots as the columns of a matrix. For example, what you're looking at here is an output of a transformation that takes I hat to the coordinates 2, -1, -2, and j hat to the coordinates 0, 1, 1. Notice, this means the matrix encoding our transformation has 3 rows and 2 columns, which, to use standard terminology, makes it a 3x2 matrix. In the language of last video, the column space of this matrix, the place where all the vectors land, is a 2D plane slicing through the origin of 3D space. But the matrix is still full rank, since the number of dimensions in this column space is the same as the number of dimensions of the input space. So if you see a 3x2 matrix out in the wild, you can know that it has the geometric interpretation of mapping 2 dimensions to 3 dimensions, since the 2 columns indicate that the input space has 2 basis vectors, and the 3 rows indicate that the landing spots for each of those basis vectors is described with 3 separate coordinates. Likewise, if you see a 2x3 matrix with 2 rows and 3 columns, what do you think that means? Well, the 3 columns indicate that you're starting in a space that has 3 basis vectors, so we're starting in 3 dimensions. And the 2 rows indicate that the landing spot for each of those 3 basis vectors is described with only 2 coordinates, so they must be landing in 2 dimensions. So it's a transformation from 3D space onto the 2D plane. A transformation that should feel very uncomfortable if you imagine going through it. You could also have a transformation from 2 dimensions to 1 dimension. One-dimensional space is really just the number line, so a transformation like this takes in 2D vectors and spits out numbers. Thinking about grid lines remaining parallel and evenly spaced is a little bit messy due to all of the squishification happening here. So in this case, the visual understanding for what linearity means is that if you have a line of evenly spaced dots, it would remain evenly spaced once they're mapped onto the number line. One of these transformations is encoded with a 1x2 matrix, each of whose 2 columns has just a single entry. The 2 columns represent where the basis vectors land, and each one of those columns requires just one number, the number that that basis vector landed on. This is actually a surprisingly meaningful type of transformation, with close ties to the dot product, and I'll be talking about that next video. Until then, I encourage you to play around with this idea on your own, contemplating the meanings of things like matrix multiplication and linear systems of equations in the context of transformations between different dimensions. Have fun! हैवी चीजें हैं भाई ये। अच्छा, ये तो हैवी था। मैं तो आराम ही कर रहा था, ये सब चल रहा था तो। दोबारा में क्या रह जाएगा भाई। भाई मेरे मेरी को लिखी पेज है, फिर कुछ मेरे को कुछ समझ ऐसा में नहीं समझ आ में रहा। आ रहा है, नहीं मेरे को कुछ कुछ ऐसा समझ में आया कि जो नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं वो इन द सेंस स्क्वीज्ड स्पेसेस उनका होते हैं। जैसे इनपुट, मुझे ऐसा लगा कि उनका इनपुट हायर डायमेंशन में होता है, हम आउटपुट लेने की कोशिश कर रहे हैं लोअर डायमेंशन। इन द सेंस कि अपने ने कुछ ऐसे मैट्रिसेस मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं ना कि अपने ट्रांसफॉर्म कर देते थे तो उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता, देन वो स्पेस बचता था। तो अभी वो है तो स्पेस ही, लेकिन वो फ्लैट स्पेस नहीं है, समथिंग समथिंग लाइक दैट। उसका कुछ होगा लाइक वो लीनियर, आई गेस कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में उसको सोचना इतना अच्छा नहीं है। उसके जो इंटरप्रिटेशंस हैं वो बाकी चीजों में ज्यादा बेहतर होंगे। अभी कभी बाद में सोचेंगे। कुछ चीजें फ्यूचर के लिए छोड़ देनी चाहिए।
अब पता चला भाई ये सब क्यों नहीं पढ़ाते कभी। भाई जीटी वाले से पढ़ाने बैठे ना तो उनका हो जाएगा एक्चुअली। भाई इसके अंदर कैसा है ना। भाई बहुत आराम से सीखना पड़ता है एक एक चीज फिर। हाँ मतलब, अरे ये यार ये ऐसी चीजें हैं, देख अभी दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है ना कि हर चीज के अंदर लोगों ने मास्टरी हासिल कर ली है, ठीक है। तो अभी कोई भी चीज तुमको सीखना है, अभी तुम पैशनेट होकर सीखने जाओ ना, तो ये मैथ्स बहुत अच्छा है, मतलब ये सीखने लायक है, ठीक है। पर अभी तुमको एग्जाम देनी है तो तुम ये टाइम पास नहीं कर सकते। हम्म, यही सब चीजें हैं भाई। कभी न्यूटन को एग्जाम नहीं देनी थी तो वो ग्रेविटी सोच सकता है। अपने को एग्जाम देनी थी, अपने टाइम पास नहीं कर सकते कि बैठ के एप्पल क्यों गिरा। अपने को तो फिर भी भाई बहुत दिमाग लगाते भाई कितना है भाई। देखा है भाई, फिलोसॉफी देखा है बंदों की। Traditionally, dot products are something that's introduced really early on in a linear algebra course, typically right at the start, so it might seem strange that I've pushed them back this far in the series. I did this because there's a standard way to introduce the topic, which requires nothing more than a basic understanding of vectors, but a fuller understanding of the role that dot products play in math can only really be found under the light of linear transformations. Before that, though, let me just briefly cover the standard way that dot products are introduced, which I'm assuming is at least partially review for a number of viewers. Numerically, if you have two vectors of the same dimension, two lists of numbers with the same lengths, taking their dot product means pairing up all of the coordinates, multiplying those pairs together, and adding the result. So the vector 1, 2 dotted with 3, 4 would be 1 times 3 plus 2 times 4. The vector 6, 2, 8, 3 dotted with 1, 8, 5, 3 would be 6 times 1 plus 2 times 8 plus 8 times 5 plus 3 times 3. Luckily, this computation has a really nice geometric interpretation. To think about the dot product between two vectors, v and w, imagine projecting w onto the line that passes through the origin and the tip of v. Multiplying the length of this projection by the length of v, you have the dot product v dot w. Except when this projection of w is pointing in the opposite direction from v, that dot product will actually be negative. So when two vectors are generally pointing in the same direction, their dot product is positive. When they're perpendicular, meaning the projection of one onto the other is the zero vector, their dot product is 0. And if they point in generally the opposite direction, their dot product is negative. Now, this interpretation is weirdly asymmetric. It treats the two vectors very differently. So when I first learned this, I was surprised that order doesn't matter. You could instead project v onto w, multiply the length of the projected v by the length of w, and get the same result. I mean, doesn't that feel like a really different process? Here's the intuition for why order doesn't matter. If v and w happened to have the same length, we could leverage some symmetry. Since projecting w onto v, then multiplying the length of that projection by the length of v, is a complete mirror image of projecting v onto w, then multiplying the length of that projection by the length of w. Now, if you scale one of them, say v by some constant like 2, so that they don't have equal length, the symmetry is broken. But let's think through how to interpret the dot product between this new vector, 2 times v, and w. If you think of w as getting projected onto v, then the dot product 2v dot w will be exactly twice the dot product v dot w. This is because when you scale v by 2, it doesn't change the length of the projection of w, but it doubles the length of the vector that you're projecting onto. But on the other hand,
Let's say you were thinking about V getting projected onto W. Well, in that case, the length of the projection is the thing that gets scaled when we multiply V by 2, but the length of the vector that you're projecting onto stays constant. So the overall effect is still to just double the dot product. So even though symmetry is broken in this case, the effect that this scaling has on the value of the dot product is the same under both interpretations. There's also one other big question that confused me when I first learned this stuff. Why on earth does this numerical process of matching coordinates, multiplying pairs, and adding them together have anything to do with projection? Well, to give a satisfactory answer, and also to do full justice to the significance of the dot product, we need to unearth something a little bit deeper going on here, which often goes by the name duality. But before getting into that, I need to spend some time talking about linear transformations from multiple dimensions to one dimension, which is just the number line. These are functions that take in a 2D vector and spit out some number. But linear transformations are, of course, much more restricted than your run-of-the-mill function with a 2D input and a 1D output. As with transformations in higher dimensions, like the ones I talked about in Chapter 3, there are some formal properties that make these functions linear, but I'm going to purposefully ignore those here so as to not distract from our end goal, and instead focus on a certain visual property that's equivalent to all the formal stuff. If you take a line of evenly spaced dots and apply a transformation, a linear transformation will keep those dots evenly spaced once they land in the output space, which is the number line. Otherwise, if there's some line of dots that gets unevenly spaced, then your transformation is not linear. भाई मैं बीच में As खो with the गया cases था we've फिर से पीछे क्यों सोया था? सो नहीं गया था खो गया था seen before, सोया one था of these भाई। linear transformations is completely determined by where it आई गेस नहीं, आई कैप जे कैप का ना अपने को आइगन के साथ कोई काम नहीं है इन द सेंस का डॉट प्रोडक्ट का। और अगर अपने को लगेगा कि काम है तो अपने इस पर वापस आ जाएंगे। हाँ क्रैमर रूल देखना है। आता है मेरे को तो याद भी नहीं कर मेरे को क्रैमर क्या भाई, हम रूल लिखा देते थे ना उसके सॉल्यूशन अंदर, फाइंड करने की एक मेथड थी ना, आई गेस। वो अपने पता है हाँ एक्स वही के नीचे लिखते थे। लेकिन याद नहीं की थी कभी अब भी वो क्या करते थे, अपना आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालने के लिए यूज करते थे अपने, बीच में क्रैमर रूल लगाते थे। हम तो सिर्फ इक्वेशन लगाते In a previous video, I've talked about linear systems of equations, and I sort of brushed aside the discussion of actually computing solutions to these systems. And while it's true that the number crunching is typically something we leave to the computers, digging into some of these computational methods is a good litmus test for whether or not you actually understand what's going on, since that's really where the rubber meets the road. Here, I want to describe the geometry behind a certain method for computing solutions to these systems, known as Cramer's rule. The relevant background here is understanding determinants, a little bit of dot products, and of course linear systems of equations. So be sure to watch the relevant videos on those topics if you're unfamiliar or rusty. But first, I should say up front that this Cramer's rule is not actually the best way for computing solutions to linear systems of equations. Gaussian elimination, for example, will always be faster. So why learn it? Well, think of it as a sort of cultural excursion. It's a helpful exercise in deepening your knowledge of the theory behind these systems. Wrapping your mind around this concept is going to help गॉसियन एलिमिनेशन वाली वही ना यानी रो इक्विवेलेंट में बना हाँ, वो रोएक्लॉन बना वो कहाँ फास्टर था फास्ट ही तो करता है भाई। भाई वो क्रैमर से बहुत ज्यादा फास्ट है, क्योंकि अगर तेरे को क्रैमर करना है तो पहले तेरे को है ना, आई गेस 4 मैट्रिक्स लिखने पड़ते थे तभी इसके तो। अंदर तो सिर्फ एक ऑर्जेंटेड मैट्रिक्स लिखो, फिर रो एक्लॉन लगा दो। हाँ, वो बहुत फास्ट होती है, तूने प्रैक्टिस नहीं करी इसलिए तेरे को स्लो लगती है। अभी तेरे को याद होगा, अभी अभी ने एक क्वेश्चन करा था जिसके अंदर 2 वेरिएबल देते थे, फिर बोलते थे कि लीनियर मतलब सॉल्यूशन कैसे आएंगे वो फाइंड करो, तो अपने लैम्बडा जेई के अंदर म्यू उसको दे कितना देते लेके बैठते थे।
और ये अपने ने जब वो REF सीख लिया था, तो REF से वो फटते देके पता चल जाता था। तो वो तभी तो मैंने बोला था कि ये बहुत आसान है। तू असाइनमेंट सॉल्व करेगा तेरे को पता चलेगा, बहुत आसान है। Consolidate ideas from linear algebra, like the determinant and linear systems, by seeing how they relate to each other. Also, from a purely artistic standpoint, the ultimate result here is just really pretty to think about, way more so than Gaussian elimination. Alright, so the setup here will be some linear system of equations, say with two unknowns, x and y, and two equations. In principle, everything we're talking about will also work for systems with larger number of unknowns and the same number of equations. But for simplicity, a smaller example is just nicer to hold in our heads. So as I talked about in a previous video, you can think of this setup geometrically as a certain known matrix transforming an unknown vector, xy, where you know what the output is going to be. In this case, -4, -2. Remember, the columns of this matrix are telling you how that matrix acts as a transform, each one telling you where the basis vectors of the input space land. So what we have is a sort of puzzle. Which input vector, xy, is going to land on this output, -4, -2? One way to think about our little puzzle here is that we know the given output vector is some linear combination of the columns of the matrix, x times the vector where I hat lands plus y times the vector where j hat lands, but what we want is to figure out what exactly that linear combination should be. Remember, the type of answer you get here can depend on whether or not the transformation squishes all of space into a lower dimension. That is, if it has a zero determinant. In that case, either none of the inputs land on our given output, or there's a whole bunch of inputs landing on that output. But for this video, we'll limit our view to the case of a non-zero determinant, meaning the outputs of this transformation still span the full n-dimensional space that it started in. Every input lands on one and only one output, and every output has one and only one input. As a first pass, let me show you an idea that's wrong, but in the right direction. The x-coordinate of this mystery input vector is what you get by taking its dot product with the first basis vector, 1, 0. Likewise, the y-coordinate is what you get by dotting it with the second basis vector, 0, 1. So maybe you hope that after the transformation, the dot products with the transformed version of the mystery vector with the transformed version of the basis vectors will also be these coordinates, x and y. That'd be fantastic, because we know what the transformed version of each of those vectors are. There's just one problem with it. It's not at all true. For most linear transformations, the dot product before and after the transformation will look very different. For example, you could have two vectors generally pointing in the same direction with a positive dot product, which get pulled apart from each other during the transformation in such a way that they end up having a negative dot product. Likewise, things that start off perpendicular with dot product 0, like the two basis vectors, quite often don't stay perpendicular to each other after the transformation. That is, they don't preserve that 0 dot product. And looking at the example I just showed, dot products certainly aren't preserved. They tend to get bigger, since most vectors are getting stretched out. In fact, worthwhile side note here, transformations which do preserve dot products are special enough to have their own name, orthonormal transformations. These are the ones that leave all of the basis vectors perpendicular to each other and still with unit lengths. You often think of these as the rotation matrices. They correspond to rigid motion, with no stretching or squishing or morphing. Solving a linear system with an orthonormal matrix is actually super easy. Because dot products are preserved, taking the dot product between the output vector and all the columns of your matrix will be the same as taking the dot product between the mystery input vector and all of the basis vectors, which is the same as just finding the coordinates of that mystery input. So in that very special case, x would be the dot product of the first column with the output vector, and y would be the dot product of the second column with the output vector. Why am I bringing this up when this idea breaks down for almost all linear systems? Well, it points us in a direction of something to look for. Is there an alternate geometric understanding for the coordinates of our input vector that remains unchanged after the transformation? If your mind has been mulling over determinants, you might think of the following clever idea. Take the parallelogram defined by the first basis vector, I hat, and the mystery input vector, xy. The area of this parallelogram is the base, 1, times the height perpendicular to that base,
which is the y-coordinate of that input vector. So, the area of that parallelogram is a sort of screwy roundabout way to describe the vector's y-coordinate. It's a wacky way to talk about coordinates, but run with me. And actually, to be a little more accurate, you should think of this as the signed area of that parallelogram, in the sense described in the determinant video. That way, a vector with a negative y-coordinate would correspond to a negative area for this parallelogram, at least if you think of I hat as in some sense being the first out of these two vectors defining the parallelogram. And symmetrically, if you look at the parallelogram spanned by our mystery input vector and the second basis, j hat, its area is going to be the x-coordinate of that mystery vector. Again, it's a strange way to represent the x-coordinate, but you'll see what it buys us in a moment. And just to make sure it's clear how this might generalize, let's look in 3 dimensions. Ordinarily, the way you might think about one of a vector's coordinates, say its z-coordinate, would be to take its dot product with the third standard basis vector, often called k hat. But an alternate geometric interpretation would be to consider the parallelepiped that it creates with the other two basis vectors, I hat and j hat. If you think of the square with area 1, spanned by I hat and j hat, as the base of this whole shape, then its volume is the same as its height, which is the third coordinate of our vector. And likewise, the wacky way to think about the other coordinates of the vector would be to form a parallelepiped using the vector and then all of the basis vectors other than the one corresponding to the direction you're looking for. Then the volume of this gives you the coordinate. Or rather, we should be talking about the signed volume of parallelepipeds in the sense described in the determinant video using the right-hand rule. So the order in which you list these 3 vectors matters. That way, negative coordinates still make sense. Okay, so why think of coordinates as areas and volumes like this? Well, as you apply some sort of matrix transformation, the areas of these parallelograms, well, they don't stay the same. They might get scaled up or down. But, and this is the key idea of determinants, all of the areas get scaled by the same amount, namely the determinant of our transformation matrix. For example, if you look at the parallelogram spanned by the vector where your first basis vector lands, which is the first column of the matrix, and the transformed version of xy, what is its area? Well, this is the transformed version of the parallelogram we were looking at earlier, the one whose area was the y-coordinate of the mystery input vector. So its area is just going to be the determinant of the transformation multiplied by that y-coordinate. So that means we can solve for y by taking the area of this new कितना बचा है वीडियो? क्रैमर रूल्स का कुछ करना है? नहीं करना नहीं, और मेरे को समझ में आ गया ये क्या बोलना चाहते हैं। मेरे को तो इतना ही समझ आया कि एरिया वाली अप्रोच लो, उसके बाद में बीच में टूट गया था मेरा। नहीं नहीं, देखो ऐसा है कि अगर तुम्हारा कोई, अगर तुम कभी है ना, एरिया पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? रुक, पैरेललोग्राम बेस एरिया, वाईटी होता है। हाँ, तो बेस इनटू हाइट होता है, ठीक है। तो कभी अगर तुम, अरे मेरा वो क्या है? हाँ ओके, हाँ, तो कभी अगर तुम है ना, बेस इनटू हाइट होता है, रुक जाओ मैंने ना लिख के रखा था। new parallelogram. एरिया होता है बेस इनटू हाइट। तो कभी तुम अपना हाइट फिक्स कर दे रहे हो, ठीक है, ये अपना आई कैप है ना, और तो ये क्या होगा कि तुम्हारा एरिया जो है वो तुम्हारा वाई एक्सिस बताएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? कि तुम अभी कोई ऐसा पैरेललोग्राम होते हो कि जैसे ये कोई वेक्टर है, ये अननोन वेक्टर है, ठीक है, u, और कभी तुम इसको इसके साथ, इसके साथ जो पैरेललोग्राम जोड़ोगे, ये ऐसा वाला, तो इसका जो एरिया होगा है ना, वो y ही बताएगा, क्योंकि ये तो तुमने यूनिट लेंथ का रखा था, ठीक है। अभी कभी तुम इसको अगर ट्रांसफॉर्म भी कर दोगे, ठीक है, तुमने मान लो कि अपनी पूरी एक्सिस को ट्रांसफॉर्म कर दिया, ये ऐसा था एक कि उठ एग्जांपल के के कोई ऐसे भी चला। मैट्रिक्स बना दे। अरे यार अभी मैं इतना थोड़ी करूंगा, वो बैठा के तो बैठा है, अभी मैं तेको बता रहा हूँ ना क्या हुआ। तो
इसके अंदर क्या हुआ कि तुमने ये पूरा यूनिट बेस सब कुछ चेंज भी कर दिया, तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका अब जो नवा जो डिटर्मिनेंट निकलेगा, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का जो डिटर्मिनेंट निकलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन का जो डिटर्मिनेंट निकलेगा, वो ये एरिया कितना बड़ा था, ठीक है, कितना टाइम्स चेंज हुआ था, इसकी इंफॉर्मेशन ये डिटर्मिनेंट ऑफ रखेगा। ए टाइम। है। मेरे को जहाँ तक याद है कि जब तुम ट्रांसफॉर्म करते हो तो एरिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स हो जाता है। हाँ, ठीक है, उससे डिवाइड कर देंगे तो तो नया उससे एरिया जो डिवाइड आएगा। कर देंगे तो तेरे को ये y मिल जाएगा। और हमने हाइट 1 रखी है इसलिए हमें वाई में हाँ, सीधा y मिल जाएगा। दूसरा कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। हाँ, यही है, समझ में आ गया ना। हाँ, केवल वो भाई, इतने सारे एनिमेशन एक साथ दिखाता है कि मैं बीच में ही खो गया कि अरे कहना क्या चाहता नहीं, वो बहुत ट्रैक रखना पड़ता है, अच्छी तरह से समझना पड़ता है। एक्चुअली ये सब इसकी वीडियो हिंदी में भी होगी, लेकिन है ना, वो हिंदी है ना, बहुत ही वैसी होगी, शुद्ध हिंदी होगी। है। मजा नहीं आती है हिंदी में। प्यारी वाली हिंदी हो तो बताना भाई। वेरी टाजियम के भी थे लेकिन वो फील नहीं आती। हम्म। अगर 2D स्पेस में एक वेक्टर है तो उसे कोऑर्डिनेट्स की मदद से डिस्क्राइब करने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। इस केस में वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स 3, 2 हैं, जिसका मतलब है कि इसकी टेल से टिप तक जाने के लिए हमें 3 यूनिट दाईं तरफ और 2 यूनिट ऊपर जाना पड़ता अब ये सब दाएं बाएं ऊपर करना लगता है ना, इसलिए मेरे को मजा नहीं आती। ये हाउल लेके क्यों बैठा है? कि वो मेरे को बेस्ट डिस्क्राइब करता है इसके लिए। वो सो रात रहा को है जागता है ना, इसलिए वो सो ही रहा है भाई। Now, the more linear algebra oriented way to भाई describe इसमें coordinates उल्लू को तो is कसम मैं अपने आप को ही मानता हूँ भाई। बढ़िया सा मेरे जैसा ही है भाई ये तो। to think of each of these numbers as a scalar, a thing that stretches or squishes vectors. You think of that first coordinate as scaling I इसका पर hat, भाई मैं the आंखें vector with झपकाता हूँ length दोनों 1. आंखें, लेकिन ये एक को लेकिन ये एक को ही सिर्फ वो करता है भाई। अभी कोई दोनों तुम लोग बंद कर मस्ती रखे। करना बंद करो भाई। ध्रुव भाई हैंडसम लग रहा है भाई। Pointing to the right, देख मेरी आंखें खुली है फिर भी इसको while बंद ही the लग रही second है। coordinate scales j hat, the vector with length 1 pointing straight up. The tip-to-tail sum of those two scaled vectors is what the coordinates are meant to describe. You can think of these two special vectors as encapsulating all of the implicit आठ assumptions आठ of a खोली coordinate तो सही। system. The fact that the first number indicates rightward पर वो motion, पता that नहीं the इसको एक second ही one आंख क्यों indicates बंद करनी upward होती है। motion, exactly how far a unit of distance is, all of that is tied up in the choice of I hat and j hat as the vectors which our scalar coordinates are meant to actually scale. Any way to translate between vectors and sets of numbers is called स्टॉप a क्यों रखा है? coordinate system. हम्म। ब्रेक लेना है क्या? अरे सॉरी, मैं तुमको, हाँ, मेरा तो प्ले हो ही रहा है, वो तुमको नहीं दिख रहा था। अच्छा बस। If I have a vector sitting here in 2D space, we have a standard way to describe it with coordinates. In this case, the vector has coordinates 3, 2, which means going from its tail to its tip involves moving 3 units to the right and 2 units up. Now, the more linear algebra-oriented way to describe coordinates is to think of each of these numbers as a scalar, a thing that stretches or squishes vectors. You think of that first coordinate as scaling I hat, the vector with length 1 pointing to the right, while the second coordinate scales j hat, the vector with length 1 pointing straight up. The tip-to-tail sum of those two scaled vectors is what the coordinates are meant to describe. You can think of these two special vectors as encapsulating all of the implicit assumptions of our coordinate system. The fact that the first number indicates rightward motion, that the second one indicates upward motion, exactly how far a unit of distance is, all of that is tied up in the choice of I hat and j hat as the vectors which our scalar coordinates are meant to actually scale. Any way to translate between vectors and sets of numbers is called a coordinate system, and the two special vectors, I hat and j hat, are called the basis vectors of our standard coordinate system. What I'd like to talk about here is the idea of using a different set of basis vectors. For example, let's say you have a friend, Jennifer, who uses a different set of basis vectors.
which I'll call b1 and b2. Her first basis vector, b1, points up and to the right a little bit, and her second vector, b2, points left and up. Now take another look at that vector that I showed earlier, the one that you and I would describe using the coordinates 3, 2, using our basis vectors I hat and j hat. Jennifer would actually describe this vector with the coordinates 5/3 and 1/3. What this means is that the particular way to get to that vector using her two basis vectors is to scale b1 by 5/3, scale b2 by 1/3, then add them both together. In a little bit, I'll show you how you could have figured out those two numbers, 5/3 and 1/3. In general, whenever Jennifer uses coordinates to describe a vector, she thinks of her first coordinate as scaling b1, the second coordinate as scaling b2, and she adds the results. What she gets will typically be completely different from the vector that you and I would think of as having those coordinates. To be a little more precise about the setup here, her first basis vector, b1, is something that we would describe with the coordinates 2, 1. And her second basis vector, b2, is something that we would describe as -1, 1. But it's important to realize, from her perspective, in her system, those vectors have coordinates 1, 0, and 0, 1. They are what define the meaning of the coordinates 1, 0, and 0, 1 in her world. So, in effect, we're speaking different languages. We're all looking फोन बज रहा है क्या कर रहा है ये मिस कॉल मार रहा है क्या कौन है ध्रुव? नहीं हेलो हाँ बोल तेरा उल्लू बीच में गर्दन बार-बार કારણ घुमाया था કે जोर से। એમાં જો તને કેટલી લેન્થ મેઝર કરવાની છે क्या बोला ध्रुव? 10 સુધી तेरा उल्लू बीच બરોબર में गर्दन जोर-जोर હું से તને घुमा કહું रहा था। બરોબર કેવી રીતે એ સેટઅપ भाई થાય वो છે हिला गर्दन हिला रहा था જો हाँ, આપણને કેટલી લેન્થ क्योंकि મેઝર मैं उस કરવાની છે तरफ 30 સુધી पूरा મેક્સિમમ देख 30 रहा हूँ હોવું इसके જોઈએ लिए। બરોબર તો હવે ધારી લે કે તને કઈ લેન્થ મેઝર કરવાની છે 7 મીટર બરોબર તો હવે એમાં તું શું કર કે આ જે 2 લખી છે ને એમાં 2 ત્યાંથી ચાલુ કર બરોબર અને 5 સુધી જા તો તને 7 મળી જશે લેન્થ 7 મીટર સમજી ગયો 8 મેઝર કરવું હોય તો 3 થી ચાલુ કરવાનું ને 5 સુધી જવાનું તો 8 મળી જશે તો હવે તને જો 10 મેઝર કરવું છે 10 તારી પાસે બે ચોઇસીસ છે કે તું 0 થી ચાલુ કરીને 10 સુધી જાવ નહીતર 5 થી ચાલુ કરીને 5 સુધી જાવ બીજા 5 સુધી તો એ રીતે 10 મેઝર કરી શકે 9 મેઝર કરવાનું હોય તો 4 થી 5 લઈ લો બરાબર તો હવે એવું કઈ નંબર છે જે આપણે મેઝર ના કરી શકે એમાં ના 0.5 ના આપણી જે આજે સ્કેલ છે ને એનું લિસ્ટ કાઉન્ટ 1 મીટર જ છે બરોબર કારણ કે આપણા ક્વેશ્ચનમાં 22 મીટર મેઝર કરવાનું કીધું હતું તો હવે એમાં હા હવે એ લોકોએ પ્રિઝન નથી માપી સમજી ગયો ને હા ના કરવા ના સીટમાં નથી દોર્યું અત્યારે હવે બધા તો એમ જ કહે છે હા looking at the same vectors in space, but Jennifer uses different words and numbers to describe them. Let me say a quick word about how I'm representing things here. When I animate 2D space, I typically use this square grid. But that grid is just a construct, a way to visualize our coordinate system, and so it depends on our choice of basis. Space itself has no intrinsic grid. Jennifer might draw her own grid, which would be an equally made-up construct meant as nothing more than a visual tool to help follow the meaning of her coordinates. Her origin, though, would actually line up with ours, since everybody agrees on what the coordinates 0, 0 should mean. It's the thing that you get when you scale any vector by 0. But the direction of her axes and the spacing of her grid lines will be different,
depending on her choice of basis vectors. So after all this is set up, a pretty natural question to ask is how we translate between coordinate systems. If, for example, Jennifer describes a vector with coordinates -1, 2, what would that be in our coordinate system? How do you translate from her language to ours? Well, what her coordinates are saying is that this vector is -1 times b1 plus 2 times b2. And from our perspective, b1 has coordinates 2, 1, and b2 has coordinates -1, 1. So we can actually compute -1 times b1 plus 2 times b2 as they're represented in our coordinate system. And working this out, you get a vector with coordinates -4, 1. So that's how we would describe the vector that she thinks of as -1, 2. This process here of scaling each of her basis vectors by the corresponding coordinates of some vector, then adding them together, might feel somewhat familiar. It's matrix vector multiplication, with a matrix whose columns represent Jennifer's basis vectors in our language. In fact, once you understand matrix vector multiplication as applying a certain linear transformation, say by watching what I view to be the most important video in this series, Chapter 3, there's a pretty intuitive way to think about what's going on here. A matrix whose columns represent Jennifer's basis vectors can be thought of as a transformation that moves our basis vectors, I hat and j hat, the things we think of when we say 1, 0 and 0, 1, to Jennifer's basis vectors, the things she thinks of when she says 1, 0 and 0, 1. To show how this works, let's walk through what it would mean to take the vector that we think of as having coordinates -1, 2, and applying that transformation. Before the linear transformation, we're thinking of this vector as a certain linear combination of our basis vectors, -1 times I hat plus 2 times j hat. And the key feature of a linear transformation is that the resulting vector will be that same linear combination, but of the new basis vectors, -1 times the place where I hat lands, plus 2 times the place where j hat lands. So what this matrix does is transform our misconception of what Jennifer means into the actual vector that she's referring to. I remember that when I was first learning this, it always felt kind of backwards to me. Geometrically, this matrix transforms our grid into Jennifer's grid, but numerically, it's translating a vector described in her language to our language. Of when she says 1, 0 and 0, 1. To show how this works, let's walk through what it would mean to take the vector that we think of as having coordinates -1, 2, and applying that transformation. Before the linear transformation, we're thinking of this vector as a certain linear combination of our basis vectors, -1 times I hat plus 2 times j hat. And the key feature of a linear transformation is that the resulting vector will be that same linear combination, but of the new basis vectors, -1 times the place where I hat lands, plus 2 times the place where j hat lands. So what this matrix does is transform our misconception of what Jennifer means into the actual vector that she's referring to. I remember that when I was first learning this, it always felt kind of backwards to me. Geometrically, this matrix transforms our grid into Jennifer's grid, but numerically, it's translating a vector described in her language to our language. What made it finally click for me was thinking about how it takes our misconception of what Jennifer means, the vector we get using the same coordinates but in our system, then it transforms it into the vector that she really meant. What about going the other way around? In the example I used earlier this video, when I had the vector with coordinates 3, 2 in our system, how did I compute that it would have coordinates 5/3 and 1/3 in Jennifer's system?
होगा डांस तो कर, खेल के डांस तो कर। You start with that change of basis matrix that translates Jennifer's अच्छे से करना है। कर चालू। You start with that change of basis matrix that translates Jennifer's language into ours. Then you take its inverse. Remember, the inverse of a transformation is a new transformation that corresponds to playing that first one backwards. In practice, especially when you're working in more than 2 dimensions, you'd use a computer to compute the matrix that actually represents this inverse. In this case, the inverse of the change of basis matrix that has Jennifer's basis as its columns ends up working out to have columns 1/3, -1/3, and 1/3, 2/3. So for example, to see what the vector 3, 2 looks like in Jennifer's system, we multiply this inverse change of basis matrix by the vector 3, 2, which works out to be 5/3, 1/3. So that, in a nutshell, is how to translate the description of individual vectors back and forth between coordinate systems. The matrix whose columns represent Jennifer's basis vectors, but written in our coordinates, translates vectors from her language into our language. And the inverse matrix does the opposite. But vectors aren't the only thing that we describe using coordinates. For this next part, it's important that you're all comfortable representing transformations with matrices, and that you know how matrix multiplication corresponds to composing successive transformations. Definitely pause and take a look at chapters 3 and 4 if any of that feels uneasy. Consider some linear transformation, like a 90-degree counterclockwise rotation. When you and I represent this with a matrix, we follow where the basis vectors I hat and j hat each go. I hat ends up at the spot with coordinates 0, 1, and j hat ends up at the spot with coordinates -1, 0. So those coordinates become the columns of our matrix. But this representation is heavily tied up in our choice of basis vectors, from the fact that we're following I hat and j hat in the first place, to the fact that we're recording their landing spots in our own coordinate system. How would Jennifer describe this same 90-degree rotation of space? You might be tempted to just translate the columns of our rotation matrix into Jennifer's language, but that's not quite right. Those columns represent where our basis vectors I hat and j hat go, but the matrix that Jennifer wants should represent where her basis vectors land, and it needs to describe those landing spots in her language. Here's a common way to think of how this is done. Start with any vector written in Jennifer's language. Rather than trying to follow what happens to it in terms of her language, first we're going to translate it into our language using the change of basis matrix, the one whose columns represent her basis vectors in our language. This gives us the same vector, but now written in our language. Then, apply the transformation matrix to what you get by multiplying it on the left. This tells us where that vector lands, but still in our language. So as a last step, apply the inverse change of basis matrix, multiplied on the left as usual, to get the transformed vector, but now in Jennifer's language. Since we could do this with any vector written in her language, first applying the change of basis, then the transformation,
then the inverse change of basis, that composition of three matrices gives us the transformation matrix in Jennifer's language. It takes in a vector of her language and spits out the transformed version of that vector in her language. For this specific example, when Jennifer's basis vectors look like 2, 1 and negative 1, 1 in our language, and when the transformation is a 90-degree rotation, the product of these three matrices, if you work through it, has columns 1/3, 5/3, and negative 2/3, negative 1/3. So if Jennifer multiplies that matrix by the coordinates of a vector in her system, it will return the 90-degree rotated version of that vector expressed in her coordinate system. In general, whenever you see an expression like A inverse times M times A, it suggests a mathematical sort of empathy. That middle matrix represents a transformation of some kind as you see it, and the outer two matrices represent the empathy, the shift in perspective. And the full matrix product represents that same transformation, but as someone else sees it. For those of you wondering why we care about alternate coordinate systems, the next video on eigenvectors and eigenvalues will give a really important example of this. See you then! चलो भाई, अभी इम्तिहान की घड़ी आ गई है। मैंने कुछ मिस किया क्या? नहीं क्योंकि तो ये तो उससे पहले भी बताया ही था ना। हाँ, तो ये वही बता रहा है, बट ये लास्टली इसने कैसे बताया कि चेंज ऑफ बेसिस के अंदर अगर कभी अपने को मतलब अपने ट्रांसफॉर्मेशन तो कर रहे हैं, ठीक है, बट अपने को पता है कि अपने ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर रहे हैं, ठीक है। कभी तेरे को जैसे कि मैं अपने जो स्टैंडर्ड में मैट्रिसेस सिस्टम में वापरता हूँ, ठीक है, उसके अंदर मेरे को कोई ट्रांसफॉर्मेशन पता है, ठीक है। अभी वो ट्रांसफॉर्मेशन तेरे को अपने मैट्रिसेस में लगाना है, मतलब तेरे को अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में लगाना है, तो मेरे को वो ट्रांसफॉर्मेशन तेरे को ऐसे बताना पड़ेगा कि जो तू अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में लगा के उस जिसका मतलब रिजल्ट सेम हो। तो उसको वो उसको बता रहा था कि पहले तुम्हारा मतलब तुम पहले उसको अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेके आओ, फिर उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, फिर उसको फिर से उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेके जाओ, तो जो पूरा नेट निकलेगा वो एक मतलब जो अपने ने जिस सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन लगाया था सेम ट्रांसफॉर्मेशन उस सिस्टम में लगेगा। ऐसा कुछ चीज है, समझ में आया? लाइक हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स क्या होगा? एक आइडेंटिटी हम जो आईजे के लेते हैं, तो नहीं, कभी भी अपना किसी ट्रांसफॉर्मेशन का आईजे के थोड़ी होगा। मान ले कि तूने कोई अरे ट्रांसफॉर्म आइडेंटिटी वाला होगा, नहीं नहीं, ऐसा आइडेंटिटी नहीं। मैट्रिक्स होगा ना। अपने ट्रांसफॉर्मेशन का अरे यानी नहीं, तेरी मान ले कि तू और मैं हूं, ठीक है, तो नहीं अभी मैं जो तेरा सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ आईजे के वाला, तो उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 1 अब तेरे को तू जो सिस्टम फॉलो करना है, तेरे को मेरे में कन्वर्ट करना है, तो तू आइडेंटिटी मैट्रिक्स और फिर मैं कन्वर्ट कर पाऊंगा, तुझे करने के लिए मेरे को कुछ देना पड़ेगा। हाँ, तो तेरे को पहले तो तेरी मतलब तेरे को अब तेरे को बताना पड़ेगा कि मैं ये सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ, तो इसका कोऑर्डिनेट तेरे अंदर ये होगा। तो पहले तू मेरे को वो मैट्रिक्स हम्म, देगा, फिर उसके अंदर मैं फिर वो हम्म। उससे अपने को तेरे मतलब मेरा जो वेक्टर है उसको मैं पहले तेरे वेक्टर में लेके जाऊंगा, तेरे सिस्टम में लेके जाऊंगा। ऐसे मतलब वो इंटरचेंजिंग है। तेरे को ना समझ में आवे तो अपनी वीडियो फिर से चलाते नहीं नहीं, समझ में आ गया, लेकिन मैं अपने हिसाब से थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। हैं। हाँ, केवल देख अभी भी सो ही रहा है। तू अपनी नॉर्मल वीडियो तो कर भाई, केवल मेरे को देखना है तू नहाया धोया भी है कि नहीं नहाया धोया है। नहीं ना आया वो तभी तो चालू नहीं कर। क्या हुआ भाई, हम क्या ही देख लेंगे। हो। चलेगा तुम उल्लू देखो अभी। ये मैं ही तो हूँ भाई, ये क्या है। अरे ये उल्लू में क्या है कि उसका मुंह नहीं खुलता है ना जब तू बोलता है, तो इतना मजा नहीं आता है। अरे हाँ, बढ़िया है, बढ़िया है। बैग कितना बचता है अभी। अपने ये लास्ट वीडियो होगी। हाँ,
Eigenvectors and eigenvalues is one of those topics that a lot of students find particularly unintuitive. Questions like, why are we doing this, and what does this actually mean, are too often left just floating away in an unanswered sea of computations. And as I've put out the videos of this series, a lot of you have commented about looking forward to visualizing this topic in particular. I suspect that the reason for this is not so much that eigenthings are particularly complicated or poorly explained. In fact, it's comparatively straightforward, and I think most books do a fine job explaining it. The issue is that it only really makes sense if you have a solid visual understanding for many of the topics that precede it. Most important here is that you know how to think about matrices as linear transformations, but you also need to be comfortable with things like determinants, linear systems of equations, and change of basis. Confusion about eigenstuffs usually has more to do with a shaky foundation in one of these topics than it does with eigenvectors and eigenvalues themselves. To start, consider some linear transformation in 2 dimensions, like the one shown here. It moves the basis vector I hat to the coordinates 3, 0, and j hat to 1, 2. So it's represented with a matrix whose columns are 3, 0, and 1, 2. Focus in on what it does to one particular vector, and think about the span of that vector, the line passing through its origin and its tip. Most vectors are going to get knocked off their span during the transformation. I mean, it would seem pretty coincidental if the place where the vector landed also happened to be somewhere on that line. But some special vectors do remain on their own span, meaning the effect that the matrix has on such a vector is just to stretch it or squish it, like a scalar. For this specific example, the basis vector I hat is one such special vector. The span of I hat is the x-axis, and from the first column of the matrix, we can see that I hat moves over to 3 times itself, still on that x-axis. What's more, because of the way linear transformations work, any other vector on the x-axis is also just stretched by a factor of 3, and hence remains on its own span. A slightly sneakier vector that remains on its own span during this transformation is -1, 1. It ends up getting stretched by a factor of 2. And again, linearity is going to imply that any other vector on the diagonal line spanned by this guy is just going to get stretched out by a factor of 2. And for this transformation, those are all the vectors with this special property of staying on their span. Those on the x-axis getting stretched out by a factor of 3, and those on this diagonal line getting stretched by a factor of 2. Any other vector is going to get rotated somewhat during the transformation, knocked off the line that it spans. As you might have guessed by now, these special vectors are called the eigenvectors of the transformation, and each eigenvector has associated with it what's called an eigenvalue, which is just the factor by which it's stretched or squished during the transformation. Of course, there's nothing special about stretching versus squishing, or the fact that these eigenvalues happen to be positive. In another example, you could have an eigenvector with eigenvalue -1/2, meaning that the vector gets flipped and squished by a factor of 1/2. But the important part here is that it stays on the line that it spans out without getting rotated off of it. For a glimpse of why this might be a useful thing to think about, consider some 3-dimensional rotation. If you can find an eigenvector for that rotation, a vector that remains on its own span, what you have found is the axis of rotation. And it's much easier to think about a 3D rotation in terms of some axis of rotation and an angle by which it's rotating, rather than thinking about the full 3x3 matrix associated with that transformation. In this case, by the way, the corresponding eigenvalue would have to be 1, since rotations never stretch or squish anything, so the length of the vector would remain the same. This pattern shows up a lot in linear algebra. With any linear transformation described by a matrix, you could understand what it's doing by reading off the columns of this matrix as the landing spots for basis vectors. But often, a better way to get at the heart of what the linear transformation actually does, less dependent on your particular coordinate system, is to find the eigenvectors and eigenvalues.
I won't cover the full details on methods for computing eigenvectors and eigenvalues here, but I'll try to give an overview of the computational ideas that are most important for a conceptual understanding. Symbolically, here's what the idea of an eigenvector looks like. A is the matrix representing some transformation, with V as the eigenvector, and lambda is a number, namely the corresponding eigenvalue. What this expression is saying is that the matrix vector product, A times V, gives the same result as just scaling the eigenvector V by some value lambda. So finding the eigenvectors and their eigenvalues of a matrix A comes down to finding the values of V and lambda that make this expression true. It's a little awkward to work with at first because that left-hand side represents matrix vector multiplication, but the right-hand side here is scalar vector multiplication. So let's start by rewriting that right-hand side as some kind of matrix vector multiplication, using a matrix which has the effect of scaling any vector by a factor of lambda. The columns of such a matrix will represent what happens to each basis vector, and each basis vector is simply multiplied by lambda, so this matrix will have the number lambda down the diagonal, with zeros everywhere else. The common way to write this guy is to factor that lambda out, and write it as lambda times I, where I is the identity matrix with ones down the diagonal. With both sides looking like matrix vector multiplication, we can subtract off that right-hand side and factor out the V. So what we now have is a new matrix, A minus lambda times the identity, and we're looking for a vector V such that this new matrix times V gives the zero vector. Now, this will always be true if V itself is the zero vector, but that's boring. What we want is a non-zero eigenvector. And if you watch chapter 5 and 6, you'll know that the only way it's possible for the product of a matrix with a non-zero vector to become zero is if the transformation associated with that matrix squishes space into a lower dimension. And that squishification corresponds to a zero determinant for the matrix. To be concrete, let's say your matrix A has columns 2, 1, and 2, 3, and think about subtracting off a variable amount, lambda, from each diagonal entry. Now imagine tweaking lambda, turning a knob to change its value. As that value of lambda changes, the matrix itself changes, and so the determinant of the matrix changes. The goal here is to find a value of lambda that will make this determinant zero, meaning the tweaked transformation squishes space into a lower dimension. In this case, the sweet spot comes when lambda equals 1. Of course, if we had chosen some other matrix, the eigenvalue might not necessarily be 1. The sweet spot might be hit at some other value of lambda. So this is kind of a lot, but let's unravel what this is saying. When lambda equals 1, the matrix A minus lambda times the identity squishes space onto a line. That means there's a non-zero vector V such that A minus lambda times the identity times V equals the zero vector to a line. That means there's a non-zero vector V such that A minus lambda times the identity times V equals the zero vector. And remember, the reason we care about that is because it means A times V equals lambda times V, which you can read off as saying that the vector V is an eigenvector of A, staying on its own span during the transformation A. In this example, the corresponding eigenvalue is 1, so V would actually just stay fixed in place. Pause and ponder if you need to make sure that that line of reasoning feels good. This is the kind of thing I mentioned in the introduction. If you didn't have a solid grasp of determinants and why they relate to linear systems of equations having non-zero solutions, an expression like this would feel completely out of the blue. To see this in action, let's revisit the example from the start, with a matrix whose columns are 3, 0 and 1, 2. To find if a value lambda is an eigenvalue, subtract it from the diagonals of this matrix and compute the determinant. Doing this, we get a certain quadratic polynomial in lambda, 3 minus lambda times 2 minus lambda.
Since lambda can only be an eigenvalue if this determinant happens to be 0, you can conclude that the only possible eigenvalues are lambda equals 2 and lambda equals 3. To figure out what the eigenvectors are that actually have one of these eigenvalues, say lambda equals 2, plug in that value of lambda to the matrix, and then solve for which vectors this diagonally altered matrix sends to 0. If you computed this the way you would any other linear system, you'd see that the solutions are all the vectors on the diagonal line spanned by -1, 1. This corresponds to the fact that the unaltered matrix, 3, 0, 1, 2, has the effect of stretching all those vectors by a factor of 2. Now, a 2D transformation doesn't have to have eigenvectors. For example, consider a rotation by 90 degrees. This doesn't have any eigenvectors, since it rotates every vector off of its own span. If you actually try computing the eigenvalues of a rotation like this, notice what happens. Its matrix has columns 0, 1 and -1, 0. Subtract off lambda from the diagonal elements and look for when the determinant is 0. In this case, you get the polynomial lambda squared plus 1. The only roots of that polynomial are the imaginary numbers, I and -I. The fact that there are no real number solutions indicates that there are no eigenvectors. Another pretty interesting example, worth holding in the back of your mind, is a shear. तुमने आर्गन पे पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर? आर्गन प्लेन ई वाला है नहीं, कॉम्प्लेक्स Another pretty नंबर interesting example, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट वो तो एक्स वाई होता है ना लाइक मैंने तो सिंगल worth holding in the डायमेंशन का ही back of पढ़ा your था mind, is a shear. This fixes I hat in place and moves j है। hat इफ तुम 1 रोटेशन over. कर रहे हो So तो it's made 90 डिग्री रोटेशन का मतलब आई होता है, जैसे अभी उसने बताया। यानी 90 कुछ ना डिग्री कुछ रिलेशन होगा, मैं पढ़ा नहीं था अच्छे से। आप 90 डिग्री रोटेशन का मतलब होता है कि आई रोटेशन किया तुमने, जो उसने भी बताया ना कि जब लैम्डा माइनस रूट -1 होगा तब 90 डिग्री रोटेशन। कुछ रिलेशन होगा, तो नहीं पढ़ा था। हो सकता है अभी 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 अपनी मेन मिस्ट्री सॉल्व हो गई है ना कि लाइक आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू क्या है, क्यों है, वो वो मुद्दे की बात वो है। एक्चुअली है क्या, चलो वो तो पता चला। तो हाँ हम अभी कर क्या अपने ने रहे हैं? भले 8:30 से बैठे 11 बज गए, ठीक है, कितना घंटा हुआ होगा, 2 ढाई घंटा बैठे, ठीक है, 2.5 घंटे के अंदर ये तो पता चल गया ना कि आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू क्या है, क्यों है, किस लिए काम आती है। और अभी इसको सीखने के बाद क्या है कि अपना है मैट्रिक्स क्या? को देखने का नजरिया भी बदलेगा। इन द सेंस कि कभी तुमको मैट्रिक्स देखोगे तो तुमको याद आएगा कि अच्छा ये ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है तो ये ऐसे ऐसे हो रहा है, वो तुम्हारा एक नजरिया बदलेगा। ऐसा नहीं होगा कि यानी हाँ, सब तुम नंबर देख रहे हो, सिर्फ नंबर देख रहे हो। सोच बदलो, matrix has भावना columns बदलो। 1, 0 and 1, 1. All of the vectors on the x-axis are eigenvectors with eigenvalue 1, since they remain fixed in place. In fact, these are the only eigenvectors. When you subtract off lambda from the diagonals and compute the determinant, what you get is 1 minus lambda squared. And the only root of this expression is lambda equals 1. This lines up with what we see geometrically, that all of the eigenvectors have eigenvalue 1. Keep in mind, though, it's also possible to have just one eigenvalue, but with more than just a line full of eigenvectors. A simple example with more than just a line full of eigenvectors. A simple example is a matrix that scales everything by 2. The only eigenvalue is 2,
but every vector in the plane gets to be an eigenvector with that eigenvalue. Now is another good time to pause and ponder some of this before I move on to the last topic. I want to finish off here with the idea of an eigenbasis, which relies heavily on ideas from the last video. Take a look at what happens if our basis vectors just so happen to be eigenvectors. For example, maybe I hat is scaled by -1 and j hat is scaled by 2. Writing their new coordinates as the columns of a matrix, notice that those scalar multiples, -1 and 2, which are the eigenvalues of I hat and j hat, sit on the diagonal of our matrix, and every other entry is a 0. Anytime a matrix has zeros everywhere other than the diagonal, it's called, reasonably enough, a diagonal matrix. And the way to interpret this is that all the basis vectors are eigenvectors, with the diagonal entries of this matrix being their eigenvalues. There are a lot of things that make diagonal matrices much nicer to work with. One big one is that it's easier to compute what will happen if you multiply this matrix by itself a whole bunch of times. Since all one of these matrices does is scale each basis vector by some eigenvalue, applying that matrix many times, say 100 times, is just going to correspond to scaling each basis vector by the 100th power of the corresponding eigenvalue. In contrast, try computing the 100th power of a non-diagonal matrix. Really, try it for a moment. It's a nightmare. Of course, you'll rarely be so lucky as to have your basis vectors also be eigenvectors. But if your transformation has a lot of eigenvectors, like the one from the start of this video, enough so that you can choose a set that spans the full space, then you could change your coordinate system so that these eigenvectors are your basis vectors. I talked about change of basis last video, but I'll go through a super quick reminder here of how to express a transformation currently written in our coordinate system into a different system. Take the coordinates of the vectors that you want to use as a new basis, which in this case means our two eigenvectors, then make those coordinates the columns of a matrix, known as the change of basis matrix. When you sandwich the original transformation, putting the change of basis matrix on its right and the inverse of the change of basis matrix on its left, the result will be a matrix representing that same transformation, but from the perspective of the new basis vector's coordinate system. The whole point of doing this with eigenvectors is that this new matrix is guaranteed to be diagonal, with its corresponding eigenvalues down that diagonal. This is because it represents working in a coordinate system where what happens to the basis vectors is that they get scaled during the transformation. A set of basis vectors which are also eigenvectors is called, again reasonably enough, an eigenbasis. So if, for example, you needed to compute the 100th power of this matrix, it would be much easier to change to an eigenbasis, compute the 100th power in that system, then convert back to our standard system. You can't do this with all transformations. A shear, for example, doesn't have enough eigenvectors to span the full space. But if you can find an eigenbasis, it makes matrix operations really lovely. For those of you willing to work through a pretty neat puzzle to see what this looks like in action and how it can be used to produce some surprising ये सब आई गेस ना अपने उसमें आएगा जीटी के results, I'll leave up a prompt here on the screen. It takes a bit of work, but I think you'll enjoy it. The next and final video of this series is going to be on abstract vector spaces. See you then. चलो भैया पता चल गया आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज क्या है, उनके बढ़िया से यूज केसेस भी हैं, और आई गेस ना ऐसे ये चीजें ना अपने उसमें करते थे इन द सेंस के हम लोग को जेई के अंदर हमारे मैथ्स वाले सर ने
एंड में पढ़ाया था कि कभी ऐसे आवे ना हायर पावर करने का, तो उसको डायगोनल में ले जाने का, और फिर उसको हाँ तो उसमें पैटर्न आ जाएगी एक। क्या जाएंगे। तुम्हें ये सिखाया था? नहीं, हमें जैसे मैंने पहले ए स्क्वायर लूंगा, फिर मेरे को कुछ एक पैटर्न दिखेगी, मैं फिर ए क्यूब लूंगा तो मुझे पैटर्न रिकॉग्नाइज हो जाएगी कि हर पावर के बाद या तो टोपी चढ़ जा रही है सब पे क्यूब की हम्म। फोर। अरे देखना, इसने इसने वीडियो जितना में भी मल्टीप्लाई दिखाया ही उसकी है ना। टोपी चढ़ेगी। ये कहाँ गया। लाइक वही। ये देख, इसने इसने भी तो कराई है ऐसे ना ये क्वेश्चंस चीज। थे जेई में। टेक द फॉलोइंग इसमें भी मैट्रिक्स, आएगा ही स्टार्ट भाई, ये कंप्यूटिंग फर्स्ट आगे की आएगा, पावर। अपना उसमें पढ़। हाँ तो बस हम वैसे ही सॉल्व करते थे पैटर्न, व्हाट पैटर्न डू यू सी। हाँ, तो अभी बात वही है कि ये पैटर्न वैटर्न सॉल्व करना, फिर वो उसका कुछ ना कुछ रिलेशन बैठेगा ये आइगन वेक्टर्स आइगन वैल्यूज के साथ। हमने शायद, क्या। और हमें सर ने शायद बोला भी था कि तुम पढ़ोगे बाद में जाके इसे सॉल्व करना। बढ़िया। अरे अपने को तो मंथन भैया ने बताया था ना कि अपने ने अभी वो क्या बोलते हैं, ये सब क्या ये कॉलेज सब। में टेस्ट किया जाएगा। इन द सेंस क्या है कि जेई सुनना, क्या करती है। बोल रहा था माइक बंद था, मेरे को नहीं पता देख, जेई क्या करती है कि क्या है कहती ना। है। यही बहुत सारी नेक्स्ट में ये हरकत करती, कॉलेज की चीजें पूछती। हाँ, वो कॉलेज की चीजें पूछती हैं, वो एक लेवल तुमको ऊपर ट्राई करने की कोशिश करती है, और उसके अंदर वो ले डूबती है बच्चों को। नितिन तेरी वीडियो थोड़ी थोड़ी बार में अटक जाती हाँ अभी तेरी वीडियो मैं बोलता हूँ अपने दोपहर को जीटीयू से है। चालू कर दोपहर दे। को नितिन नहीं, नहीं है? कहाँ पे? जी सी में। अच्छा गांधी में। नितिन सुन, हम्म। तो आज जब कॉलेज जावे ना, हम्म। तो तेरा वो सूट मेरे को देते जा, ब्लेजर। हम्म। हाँ, सुनाई दे कौन रहा सा है, वाला फिर से लेना अटक है। गया। ब्लैक वाला ही भाई। अच्छा, और दिस बडी केवल। इज फॉर। मैं अपने मिल सकते हैं, ध्रुव तेरे को आज दे सकता हूँ। हाँ हाँ। पता मेरे फिर पास ना क्या भाई, करना। मैं ना देखो फोटो फाड़ के भेजूंगा, क्योंकि मेरे पास है ना बहुत से हैं। ठीक है। ठीक है हम्म। अभी ध्रुव देख, भाई। मेरा तो यही है कि अपने हाँ आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं पढ़ते इन हैं द यानी सेंस, क्या पढ़ेंगे। सॉल्व करने अभी चालू करते हैं। हैं। थोड़ी देर करता है अभी, तू कब तक कर सकता है नितिन। कर सकता हूँ, मैं आसान से कर सकता हूँ। हल भाई, आवाज नहीं आ रही, तेरी आवाज कट रही है नितिन, नेटवर्क की वजह से कट कट के आ रही है, अच्छे से बोल। अब नेटवर्क इशू है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। ये जो तेरे को आ रही है तो तू मेरे को बता। नहीं मेरे को भी नहीं आ रही। आधा मेरा। अभी तो उसने वीडियो पॉज करा है, नितिन एक काम का चैट में लिख दे, हम समझ लेंगे। नहीं, मैं वो लास्ट आइगन वैल्यू वाला आइगन बेसिस जब चल रहा था ना, तब मेरा उसका वीडियो पूरा कट रहा था। ध्रुव, अपने बता क्या करना है दोपहर में। अपने दोपहर को मैं तो बी डबल ही पढ़ने बैठने ही वाला हूँ। बी डबल में कितना करा है तूने। डीसी सर्किट पढ़ लिया मैंने सारे थ्योरम थियरम उसके। अप्लाई करे करना है। हाँ करके रखे हैं, और क्वेश्चंस करने हो तो वो भी कर सकते हैं। मैंने कल पढ़े हैं थियरम, मेरे को भी अप्लाई करना है। अब तो ठीक है, चलो अप्लाई करेंगे। बाकी कुछ और पढ़ना है तो फिर
तेरे को भी तो नहीं आता होगा ना, अभी तो जीरो पे ही होगा तू भी। किस पे? बीडे वाली। बीडब बोला ना, डीसी अरे सर्किट। डीसी डीसी के बाद की बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं, उसके बाद मैंने एसी नहीं पढ़ा। तो कहाँ से पढ़ता है? डीसी तो मैंने बुक से ही पढ़ा है, बुक। और एसी? एसी अभी पढ़ना ही चालू नहीं किया। ठीक है, तो अपने देखेंगे। और उसके बाद कुछ मतलब एसी चालू करना होगा तो करेंगे। देखो, हम्म। मैं तुमको रिकमेंड करता हूँ, अगर तुम एसी करने वाले हो ना, तो एसी के अंदर अ, हम्म। जो अपनी बुक मैंने तुमको शेयर करी है ना, वो बुक पढ़ लेना। और कुछ ना समझ में आवे तो पुराना सर्किट साइड ले लेना। ठीक हम्म। है। तो स्टार्टिंग का पार्ट है, उसके अंदर एसी दो पार्ट में स्प्लिट है। ठीक है, उसके दो पार्ट है। एक है मतलब फर्स्ट सिंगल फेस। ठीक है, सिंगल फेस। और एक होता है थ्री फेस। ठीक है। तो सिंगल फेस के अंदर कुछ नहीं है, सिंगल फेस के अंदर वही सब बताएंगे कि आरएमएस वैल्यू क्या होती है, फिर कंप्यूट कैसे करते हैं, कभी दो फंक्शन है तो उसका एडिशन कैसे होगा, और फिर अ, अपना वो क्या बोलते हैं उसको, एक नहीं होता था, हाँ, इंडक्टर और फिर कैपेसिटर और रजिस्टर पैरेलल में होगा तो क्या होता है, या कभी मतलब ऐसे जो अपने आरएलसी सर्किट बनाते थे ना। एलसी सर। हाँ, आरएलसी सर्किट, उसके अंदर फिर आरएल, आरसी और सी, आर एल, ऐसे सारे सर्किट्स है, इनकी कॉम्बिनेशन का क्या होगा। और इम्पीडेंस। हाँ, इम्पीडेंस। फिर उसके सिंपल सिंपल वाले जो अपने मैथमेटिकल वो आते थे कैलकुलेशंस, फिर भाई अपने ने ये दोनों पैरेलल में लगा दी है तो इसका नेट रेजिस्टेंस बताओ। या फिर कभी ऐसा पूछ लेंगे कि क्या बोलते हैं, दो सर्किट मतलब दो कंपोनेंट पैरेलल में है तो वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, कुछ ड्रॉप। वहाँ वोल्टेज ड्रॉप है, फिर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। तो ऐसे सब के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। और ये सब न्यूमेरिकल में होगा, और न्यूमेरिकल बहुत इजी होते हैं। ठीक है, बहुत इजी होते हैं। थियरी के अंदर तुमको है ना खाली वो सब आना चाहिए। कितने डीसी सर्किट? एक मिनट। जैसे डीसी सर्किट पूछ रहे तो कितने न्यूमेरिकल्स, सिर्फ न्यूमेरिकल्स कुछ? हेलो। हम्म। हाँ हाँ। बोल बोल। जैसे अपने डीसी सर्किट चैप्टर में वो थियरी भी पूछेंगे ऐसे? नहीं, ऐसा नहीं होता। देख, मैं तेरे को बताता हूँ डीसी के अंदर क्या होता है बेसिकली। ठीक है, हेलो। बेसिकली उसके अंदर डेफिनेशंस आती है। ठीक है। तो कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, 3 मार्क के अंदर ऐसे कर लेंगे, केसीएल, केवीएल, और फिर ऐसे कुछ और एक कोई ऐसा कुछ ले लेंगे, उसके बोलेंगे तुम थियरम लिख दो खाली। ठीक है। या तो फिर केसीएल केवीएल की कोई छोटी सी सर्किट दे देंगे। ठीक है, जैसे एक मैं यहाँ पे सर्किट बना देता हूँ, और फिर बोल देंगे कि बस इतनी सर्किट है, इतनी ही सर्किट। और बोल देंगे कि इसके अक्रॉस का करंट क्या होगा, या इसके अक्रॉस का मतलब करंट कितना फ्लो हो रहा है वो तुम केवीएल से ढूंढ के बता दो। ऐसे सब चीजें करते हैं, ये सब 3 मार्क्स के अंदर। या फिर वो लोग पूछेंगे कि इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट सोर्सेस क्या होते हैं, ये एक दो चीजें जैसे पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये सब 3 मार्क्स हाँ। में होता है। फिर अ, और ये लोग क्या करेंगे कि कभी अगर है ना 7 मार्क के अंदर तुमको न्यूमेरिकल पूछेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल कौन से होंगे, जिसके अंदर डेल्टा स्टार लग रहा होगा वो वाले न्यूमेरिकल। या तो फिर क्या करेंगे, कैसा लिख देंगे, स्टेट कोई भी थियरम, थेवेनिन थियरम, नॉर्टन थियरम या सुपरपोजिशन थियरम, एंड सॉल्व बिलो सर्किट यूजिंग दैट थियरम। ठीक है, तो ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाएंगे, तो ये 7 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। या तो फिर क्या करेंगे, थियरी के अंदर पूछ लेंगे, स्टेट कोई भी ये तीनों में से कोई भी थियरम एंड एक्सप्लेन विया एग्जाम्पल। ठीक है। या तो फिर क्या करेंगे, डेल्टा स्टार का जो वो
डेरिवेशन होता है ना, वो डेरिवेशन पूछ लेंगे, तो इतनी चीजें वो हाँ। लोग करते हैं। हम्म। डीसी का जरूर ये पैर रहता में है। अपने नहीं कर पाएंगे, मेरे को भी 2 सब्जेक्ट सबमिशन आ गए। हाँ ठीक है ठीक है। मैं तेरे को कोड देने आऊंगा, वो फोन कर लूंगा मैं तेरे को। हाँ हाँ। ठीक है, तो मेरा अभी तो उल्लू मेरे को कैसे कपड़े गायब वपड़े कैसे हो सुखाने रहा है के। नितिन तेरा? क्या क्या बोल रहा है? हेलो। वो उल्लू गायब वहाँ कैसे हो पे गया मेरा? तेरे में डिसेबल क्यों नहीं दिख रहा उल्लू? डोंट वॉच करके, डोंट वॉच दबा सकते हैं तो हमें दिखेगा ही नहीं कुछ। अच्छा सुनो, मैं तो सोचा भाई अभी मैं, प्यारा उल्लू है, कहाँ चले गया? सुनो उल्लू। अभी है ना, मैं कपड़े फैला के आता हूँ, ठीक है? तुमको ब्रेक लेना है तो तुम ब्रेक ले लो ना। और अभी बता कितने दूँ देर क्या? करना है? पता नहीं भाई, मेरे को नहाना भी है। नहाना क्या है मतलब, मैं ऐसा बोल रहा था कि फिर बाद में करते हैं अभी। बाद में वो चला जाएगा, 2 बजे चला जाएगा और 12 बजे तो वैसे ही खत्म हो अरे जाएगा लगभग। कैसे 12 बजे खत्म हो जाएगा? 2 बजे जाना है उसको, तो 12 बजे खाना पीना पी के करके वो सब करके। चल फिर मैं भी ऐसे ही टहल के आता हूँ ठहर के आएगा। घर पे। कभी कभी दिख नाश्ता। जाएगा, नहीं दिख रहा हाँ हाँ। कहाँ पे उल्लू को लेके बैठा है? है।
ये गाना कैसे लगाते हैं? वो तो नितिन को ही पता है भाई कैसे कर। क्या सिर्फ होस्ट ही लगा सकता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं आता। एक प्रेजेंटिंग। तेरे को सिर्फ प्रेजेंट करके लगा था एक बार। मेरे को अपनी स्क्रीन शेयर करो। हाँ स्क्रीन शेयर कर लगा। यूट्यूब की वीडियो चलेगी तो गाना भी तो चलेगा। भाई ये कौन आ गया? कौन सा गाना लगाओ? जो बजाने। बढ़िया बढ़िया। क्या ध्रुव भाई, आवाज नहीं आ क्या रही यार ध्रुव। फालतूगिरी कर रहा है? तेरे को नहीं आ रही आवाज? नहीं। है ध्रुव भाई, एक क्या काम कर फालतूगिरी कर रहा है तू? कुछ तो सेटिंग होगी जहाँ से देखो ऑडियो को अपने को अरे अलाउ तू करना। जब स्क्रीन शेयर करता है ना पागल, तो वहां पे एक ऑप्शन आता है, शेयर द ऑडियो ऑफ द स्क्रीन टू। यार, क्या? जब तू स्क्रीन शेयर करता है ना तो वहां पे एक उस ऑप्शन वो आता है। बेचारा बोल भी नहीं पाएगा बोलने जाता है फिर जाता तू अपना स्क्रीन शेयर बंद कर। नहीं, बिना स्क्रीन शेयर करे नहीं कर सकते। कल तूने कैसे किया था? मैंने स्क्रीन शेयर चालू ही था मेरा। मैं जब भी तुमको वीडियो दिखा रहा हूँ तो कैसे वो ऑडियो भी जा रही है। और अभी क्या है कि मेरा नेटवर्क इशू पता नहीं क्यों हो रहा है। है। बहुत हो रहा है भाई थोड़ी थोड़ी सी आवाज आती है थोड़ी थोड़ी सी कट जाती है थोड़ा थोड़ा खुद से समझना पड़ता है। तो बनना है, एआई बनना है यार। तू अभी एआई सीख रहा है ना, एआई कैसे सीखता है? थोड़ा थोड़ा में सीख जाता है ना वो भी। आठ आठ उल्लू आया, उल्लू आया। भाई वो एआई है तू साले। बी बेटर देन एआई। ये उल्लू बहुत धीरे हिलता है यार मैं पूरा। तो तेरा पीसी धीरे है ना भाई? क्या? तेरा पीसी धीरे है ना? अरे इसका जीपीयू अच्छा नहीं है ना इसके ये दिक्कत देता है। हम्म। अभी सिर्फ मेरा देख। इसकी एक ही आंख बंद होती है भाई मेरी तो दोनों झपकती है ना। भी है उसका यार। हाँ डाट। ध्रुव भाई का मस्त चल रहा है भाई। मेरा भी हिलता है, मेरा भी बढ़िया हिलता है। हाँ। चलो चालू कर। हम्म। तो यार मेरा उल्लू ये रहा है। ऐसा लग रहा है रैबिट को किसी ने मार मार के गुस्सा दिलाया होता है। बेचारा ऐसा लग रहा है 9 to 5 में थक गया है। वो कहीं से आ रहा है तो वही लग रहा है। अपने लेक्चर में आधे से ज्यादा टाइम तो यही सब मस्त मजे ले रहे होते हैं कि भाई ऐसे क्या अपने बैकग्राउंड सेट अबे कर तो क्या सकते मजे, हैं। क्या यार, अभी तुम इतना तो पढ़े। कम पढ़ रहा है क्या तेरे को? चल कोई ना, भाई ये सब कम बंद क्या कर। भाई वो तो मैं आराम में ही गिनता हूँ अपना वो टाइम। चल। बंद करो क्या तू चालू करना अपना वो। ध्रुव अपने पन्ने पलट रहा है।
तो मैंने अपनी स्क्रीन शेयर करी है। कॉलेज की स्टार्टिंग से यही बुक चल रही है। वो तो मेरी भी एक ही है, लेकिन मैं उसके अंदर ये सब नहीं करता ना, मैथ्स अपना। मैंने अभी स्क्रीन नितिन शेयर कुछ करी है, बोल रहा है लेकिन तो है ना अभी पता भी नहीं शायद चलेगा स्क्रीन भाई, शेयर वो हो नहीं रहा उसकी है। हुई हुई। तो हियर वी गो अगेन। भाई तो नितिन अपने पुराने लैपटॉप पे बैठ गया है क्या तू? नहीं भाई नहीं। बस्ती वाले पे बैठा है क्या तू? नहीं भाई नहीं। ये हंसते हंसते रुक गया वो। भाई ऐसा लग रहा है वो मरते टाइम बुड्ढा आखिरी में वो नहीं करके जाता। अरे तो एक सेकेंड है ना, तुम भी हाँ, रुको, मैं ना बोलते अपना टपक नेटवर्क है जाता है, ना वैसा सा डिस्कनेक्ट लग रहा करके है। कनेक्ट करता हूँ। भाई वीडियो बंद कर। अभी अभी हाँ, बढ़िया अभी देख चलेगा। तू क्या बोल रहा है। अब बढ़िया चलेगा। बढ़िया। बढ़िया चलेगा अब। अपने वाले पीसी पे बैठा है क्या तू? नहीं नहीं भाई, अभी चल रहा है ना बढ़िया से। हाँ चल रहा है अभी तो। हम्म, हाँ तो देखो अपने ने क्या क्या करा था। एक सेकेंड सी। अपने ने मैट्रेस वैट्रेस तो कर दिया था। ये तो सब फालतू गिरी है। अबे रुक जा, ध्रुव कहीं चला तो नहीं गया ना? ओए ध्रुव, गेटी की तरह बोला उसको। एक मिनट, अभी उसके घर पे मस्त बजाते हैं ना अपने। अरे वो हेडफोन पहन के रखता है ना, वो दिक्कत है। कल मेरे जाने पे क्या बजा रहे थे? मैं तो भीगे होठ तेरे। ये उल्लू अच्छे से नाचता नहीं है। अरे वो बन्नी मस्त नाचता है। कौन नाचता है? बन्नी बन्नी। ये माइक बंद है तेरा नितिन। कैसे बजाएंगे जी दोबारा से? भैया जी क्या बजा उस पे? चल भाई बहुत हो गया टाइम पास। रुक जा, अभी मेरे को फिर से बोला आने दे अपना, कहाँ गया? ये। हाँ तो हम्म, अभी अपने ने इक्विवेलेंस ऑफ मैट्रिक्स वेट्रिक्स तो बाद में जाए। रो वो एक्लोन सब फॉर्म तो। सीख लिया था। ठीक है, आर ई हम्म। एफ और आर आर ई एफ दोनों सीख लिए थे। ठीक है, हम्म। एक बार रिवाइज मार लेते हैं। एवरी जीरो ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है, यानी कि जीरो जीरो लास्ट में आना चाहिए। एक मिनट यार। आसान भाषा में समझा देते हैं तो जीरो वाली जो भी रो है वो आखिरी में आनी चाहिए, उसके ऊपर जो भी नॉन जीरो रो है उसके अंदर जो स्टार्टिंग पहला है वो नंबर वन होगा वो तक वन होनी होगा। चाहिए। वो लीडिंग वन बोलते हैं उस चीज को बढ़िया से। हाँ, और और वो हमेशा राइट में आना जो चाहिए। कि सिर्फ और इसी बुक में लिखा है ना जो तो। हम्म। हाँ। इन द सेंस कि यहाँ पे एक ऐसा स्टेयर का सारा पैटर्न बनना चाहिए वन का। और इस पैटर्न में अगर कभी जीरो आ रहा है चलेगा, लेकिन फिर वन यहाँ पे होना चाहिए ऐसा। कभी इस इसके इसके नीचे जो नंबर है ना, इसके यहाँ पे कोई नंबर नहीं हो सकते ऐसा। जीरो ठीक ही है। होना चाहिए वहां पे। हाँ, बढ़िया सा हो गया। ये सब अपने ने सीख लिया अरे था रिड्यूस बढ़िया तो बढ़िया से। रिड्यूस रिड्यूस रिड्यूस। अरे रिड्यूस में कुछ नहीं होता यार, तेरा आर ई एफ आ गया ना। अभी इसके ऊपर के हम्म। एलिमेंट सारे जीरो बना दो जाने के। जीरो, सारे जीरो, सारे जीरो, ऊपर सारे के जीरो। नीचे के? ऊपर और अच्छा, वन नीचे के दोनों नीचे के, ना जैसे मतलब। वन है तो ऊपर के भी जीरो और नीचे के तो जीरो बने ही होंगे आर ई एफ में। तो ऊपर के भी हम्म। जीरो बना देने के ऐसा। ठीक है, यानी पहला नंबर वन होगा। हम्म, चलो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ये बहुत इजी था। ठीक है। नॉन जीरो रो जितनी है वो रैंक है। हाँ, आर ई एफ के अंदर नॉन जीरो रो। बढ़िया है, बढ़ा के।
इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय गॉस जॉर्डन मेथड। ठीक है, इसके अंदर अपने क्या करते थे, हाँ, आई इक्वल्स टू, मतलब पहले एक ए लिखते थे, ए इक्वल्स टू आई ए लिखते थे, फिर है ना इसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं वो इस आई पे भी लगाते थे। तो ए को हम लोग वन 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 यानी आई बनाते थे, ए से आई बनाते थे तो आई ए इनवर्स बन जाता था। ठीक है। हाँ। हाँ, ये भी अपने ने सीख लिया था। गॉस जॉर्डन। हाँ, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, इसके अंदर दो मेथड होती थी, गॉस एलिमिनेशन मेथड गॉस। और गॉस जॉर्डन मेथड। ठीक है, दोनों अपने ने कर ली थी, दोनों में कोई फर्क नहीं है। हम्म। एलिमिनेशन के अंदर अपने आरईएफ बनाते हैं, ठीक है, फिर कंपेयर करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि अपने को 0 0 0 जेड मिलता है, तो जेड की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाती है, और दो की वैल्यू अपने को यहाँ पे मतलब वाई जेड होता है, फिर यहाँ पे रिप्लेस मारते हैं, लाइक ऐसा होता है 0 0 जेड 0 y z x y z, ऐसा कुछ बनता है। तो यहाँ से अपने पहले z डायरेक्ट कंपेयर करते हैं, यहाँ पे फिर इसको सब्सटीट्यूट करके y निकालते हैं, और फिर y z दोनों के वैल्यू रख के x निकालते थे। ठीक है। और ये जो गॉस जॉर्डन मेथड होती है ना, गॉस जॉर्डन के अंदर क्या करते हैं अपने, RREF बनाते हैं। इन द सेंस क्या बनाते हैं, इसको। हाँ ये ऐसा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये कुछ नहीं है, यहाँ से तेरे को x डायरेक्ट मिलेगा, y डायरेक्ट मिलेगा, z डायरेक्ट मिलेगा, सीधा कम देखना ही है, ऐसा। समझ में आया? हाँ। हम्म। ये वाला भी अपने ने करा था, याद है ना? पता। हम्म। हाँ हाँ। फटफट स्क्रॉल अप कर भाई, बहुत ज्यादा होगा, या फिर जूम आउट कर दे थोड़ा सा। आइगन वैल्यूज तक करा था हमने, तो वहां तक चले ही जाओ। ये अपने को नहीं पता ये लोग ये क्या करते हैं, ये शायद पैरामेट्रिक इक्वेशन लगाते हैं तो कुछ, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि कोई काम का है, बिकॉज अपने मैंने असाइनमेंट सॉल्व करा वैसा कुछ आया नहीं कभी इस बीच में। हम्म। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। कितना मस्त से लिख देता है, अंडर अ लीनियर ऑपरेटर। अपनी घिसो, तुमको पता चलेगा कि लीनियर ऑपरेटर क्या है। अब ये बुक का काम सिर्फ पास करवाना है, बाकी तुम अपना अपने हिसाब से देखो भाई। हम्म। अभी मैं तुमको सच बताऊं, अभी है ना, ये निकालना ना, आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू निकालना ना बहुत इजी होता है। तो इजी तो है। हम्म। आइगन वैल्यू तो भाई वो तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डालनी है, लैम्डा निकाल दोगे, ठीक है। हम्म। फिर आइगन वेक्टर के लिए बस उसको क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू डालो ए माइनस लैम्डा आई के अंदर, फिर वो तुम पूरा लिखो, फिर उसके अंदर क्रैमर रूल लगाओ बढ़िया से आखिरी में, और फिर उसको पैरामीटर के टर्म्स में लिख दो, तुम्हारा आइगन वेक्टर आ गया। मेरे को नहीं लगता इसमें कभी तुमको क्रैमर की भी जरूरत पड़ेगी। नहीं लगाते हैं, क्यों लगाते हैं पता है? क्यों? तुम कोई भी एक एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल खोल। करते हैं, 1 मिनट रुक जा ना, पहले पढ़ ले ना, एक बार रिवाइज मार ले ना। थ्रू इक्वेशन लिख ले कैरेक्टरिस्टिक की, वो काम की।
ये सब टर्मिनोलॉजी देखो यहाँ पे। सेट ऑफ ऑल आइगन वैल्यू इज कॉल्ड आइगन स्पेस। Set of all eigenvalues of A is called spectrum of A. ये important है। जो लिख रहा है क्या, स्क्रीनशॉट खींच ले। हो गया भाई। डिटर्मिनेंट ये होता है सम ऑफ माइनर्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। S2 क्या होता है? ऐसे पता है अपने को आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ती, पता है। अपने कभी डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं ना, अगर अपने को A दिया हुआ है ना तो अपने डिटर्मिनेंट से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, पता है। भाई तू डिटर्मिनेंट से जब निकालेगा ना तो तू ये कैरेक्टरिस्टिक की जो इक्वेशन लिखता है ना, वो तो बन ही इवेंचुअली जाएगी। वहीं पे जाके, हाँ वो तो पता ही है। तो वो वहीं पे जाएगा। अब इससे बढ़िया है कि तू डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक की इक्वेशन निकाल और वहीं से लैम्बडा निकाल। बाकी तो डिटर्मिनेंट से करेगा ना तो वो लंबा भी होगा। पहले तो तू पूरा डिटर्मिनेंट हम्म। सॉल्व कर, ठीक है, वहां से तू इक्वेशन पे आएगा, इक्वेशन कोई से तो आसान लैम्बडा पे आएगा। मैट्रिक्स हो तो, जैसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो वो क्या? सुविधा आती। हाँ वो वाले बढ़िया है कि उसका तो जो डायगोनल एलिमेंट है वही अपना वो हो जाता हाँ, लेकिन अभी हमें पता चल गया ना कि होता है। है। हाँ पर GTU में तुम थोड़ी ऐसा लिख सकते यार, सीधी सी बात है ना भाई। GTU वालों का तो तुमको पता है ना भाई, ये कोई जेई थोड़ी चल रही है। तो वो जनरली ऐसे पूछेगा ही नहीं भाई कि ये लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर, वो बढ़िया से अच्छा ही सवाल डालता है जिसके अंदर बनेगी इक्वेशन। ये लास्ट टाइम क्या कर रहा था मेरे को खुद को नहीं पता। ठीक है, नई लिखा शुरुआत हुआ है करते बस। हैं। नई शुरुआत करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नई शुरुआत। अरे हमने आइगन वेक्टर्स देखा और फिर छोड़ दिया कि हम आज के लिए इतना रखते हैं, ऐसा कुछ था। अलग मन पांडे में है क्या बोलता था? विश्वास। ध्रुव ये था सब ना। प्रॉपर्टीज हैं। क्या? ये अलग सब पांडे क्या प्रॉपर्टीज बोलता था? काम की। क्यों नहीं जुड़े पड़े? प्रॉपर्टीज तो देख मैं बता दूं फटाफट से। जैसा तुम लेमड़ा के साथ, मतलब ए मैट्रिक्स का, अगर ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू लेमड़ा है तो तुम उसके साथ जो करोगे ए के साथ वही सेम लेमड़ा के साथ हो जाएगा। जैसे लेमड़ा है अगर ए का आइगन वैल्यू, तो अगर ए इनवर्स की हमें आइगन वैल्यू चाहिए तो वो क्या हो वन जाएगी, बाय 1 बाय लैम्बडा लेमड़ा हो होती है। जाएगी। फिर ए की पावर के है तो लेमड़ा की पावर के हो जाएगी। अगर किसी के को मल्टीप्लाई कर दो ए के साथ तो के टाइम्स लेमड़ा हो जाएगी। वैसे वैसे प्लस माइनस करोगे तो प्लस माइनस हो जाएगी, ट्रांसपोज करोगे तो सेम ही रहेगी। ये इधर लिखा ये हुआ है। देखिए प्रॉपर्टी हुआ है। आइगन वैल्यू ऑफ अ ट्राइंगुलर matrices are diagonal elements of the matrices. ये वाला कभी काम नहीं आया, 7वें नंबर की प्रॉपर्टी। कहीं ना अपने करते हैं। इसमें नहीं मिलेगा भाई, इसमें सारे वही एग्जांपल है, पिछली देख, बार करे ये तो थे नहीं। अपने ने। फाइंड द वैल्यू सम निकालने एंड पे नहीं प्रोडक्ट, अरे इसमें साथ सुन तो सही। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो ये तुमको ऐसे डायरेक्ट पता होना चाहिए कि सम ऑफ आइगन हाँ वो वैल्यूज तो यानी कंफर्टेबल 4 था माइनस ना, ये इसका सम। फिर प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज यानी इसका डिटर्मिनेंट। तो डिटरमिनेंट ये, होता है। हाँ ये सब लर्न करना पड़ता है। अबे तो वो तो देख, अभी भी तो देखा है और लर्न तो है ही ना ये थोड़ा तो। ये कहते हैं टू आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिसेस ए आर इक्वल and are 1 times to the third.
एक काम करते हैं, इसको नहीं करते, अपने ना जीटीयू का ही सवाल लेते हैं। वही बढ़िया चल रहा है ना, अभी अटक नहीं रहा है ना, आवाज भी परफेक्ट आ रही है ना। अभी सही चलता है। वो क्या है कि बहुत टाइम हो जाता है ना तो पीसी बोलता है, ओए मेरे को पॉज दे। वैसे अपने ने सीखा था कंप्यूटर नेवर ट्रायर्स, बट ठीक है। अपने जितना तो नहीं थकता ना भाई। वो भी है। 8 घंटे की नींद लेनी पड़ती है। ये डायगोनाइजेबल अपने बाद में तो पढ़ेंगे, ठीक है। फिर वो आखिरी में आएगा। हाँ ये करते हैं। सेकंड नंबर, फाइंड ऑल आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ, ये दो मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स ये कहाँ से आ गए? भाई ये कुछ अलग तो नहीं है कि अरे चलना एक का निकालते फिर जेमिनी ऐसे बोलेंगे तू भी इसका ही नहीं निकाल नहीं दे नहीं, भाई। देखिए देखना, ये थर्ड का अंदर कुछ भी नहीं दिया है ना, तो ये वाला जो है ना, ये थर्ड का क्वेश्चन है वो एक्चुअली। थोड़ा हाँ, तभी अपने को ठीक है। इसका करना है। ठीक है चल। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालना है ना। हम्म। चलो तो दिखला जा। वैसे ना मेरे को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ना अभी थोड़ी याद नहीं है। लेमड़ा क्यूब माइनस S1 लेमड़ा स्क्वायर जिसके अंदर S1 है अपना डायगोनल एलिमेंट का सम प्लस S2 लेमड़ा। S2 अपना है वो प्रिंसिपल जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उसका माइनर। और फिर प्लस माइनस अल्टरनेट चलता है उस हिसाब से देख लेना और आखिरी में डिटर्मिनेंट आता ठीक है, तो S1 इज इक्वल्स टू 0।
तो मेरी S3 तो 16 आया है। एक बार मैंने ना फटाफट फटाफट करा है तो मेरा गलत हो सकता है। मेरा गलत हो गई। 16 है वो, है ना। मैंने 12 3 जा 48 ले लिया था। शुक्रिया ध्रुव। की वैल्यू आई किसी की? नहीं, अच्छा, कब आए तो बोलना, मेरी एक तो आ गई है। क्या आई है? तू अरे करना। आया है। निकालने देना आया। बता था। वही तो बोल। फिर तू करना भाई, अभी बाद में बताऊंगा ना मैं। अरे तू ये तो बता सकता है उसकी इक्वेशन सही बनी है कि नहीं। किसकी सही? इक्वेशन तो सही है। नितिन। इक्वेशन कहाँ है तेरी? नितिन की है ना, सेम मेरी भी वही बनी। लैम्बडा क्यों -6 लैम्बडा। मेरी तो उल्टी बनी। उल्टी मतलब? मेरी बनी है लैम्बडा क्यूब -12 लैम्बडा -16। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बन सकती है। डिटर्मिनेंट तो माइनस जा ही नहीं सकता। अरे डिटर्मिनेंट माइनस नहीं जाएगा, लेकिन प्लस माइनस अल्टरनेट चलता है ना। हाँ तो देखना, ये -2 लिया पहले में, ठीक है। तो ये 1 था, वो पॉजिटिव था। फिर देखिए -3 था, उसका पॉजिटिव करा, ठीक है। और एक वो जो मिनट एक प्लस मिनट थे तो एक प्लस ही मिनट जाएगा। एक मिनट, बता कहाँ से क्या करा? भाई, देखिए भाई 1 वो था। S3 के आगे माइनस आएगा। प्लस S3 जो तूने इक्वेशन लिखी ना ऊपर, मेन जनरल, अच्छा, वहाँ पे माइनस है। तो माइनस प्लस है। माइनस अल्टरनेट। हाँ तो वही तो बोला था। तो वो तो फिर माइनस भी होगा, इक्वेशन तो डिटर्मिनेंट सेम तो बन ही दोनों, नहीं रही। डिटर्मिनेंट तो दोनों का सही है। लेकिन वो जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स वाली इक्वेशन है ना, वो देख। ये देखिए, एक तो सुधारा हो गया नितिन की इक्वेशन में अपना। और ये जो है अभी ना, वो, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का सम नहीं होता ना, वो तो माइनर होता है ना। अब जो माइनर होता है। अरे वो माइनर S1 के लिए होता है। ठीक है, सम जो है माइनर एनी, वो ऊपर करना, एक बार अपने क्रॉस चेक करते हैं। -20 + 18, ये तो सही है। 4, वो पहले 1 का करा। -4 -20 +18, ये सही है। फिर -5 के लिए करेंगे। 4 -6 3 जा 18 होता है मेरे भाई। ये है, ये है। भाई बोला भाई ना भाई, भाई। मेरी गलत नहीं है भाई। मेरे को भरोसा था, मैं आराम से कर रहा हूँ, अभी तो कैलकुलेशन नहीं गलत जा सकती। मैंने तो जेई में ऐसी कोई हगा नहीं था मैंने। अरे भाई वो पता अभी नहीं देख, मेरे अभी फिर साथ क्या हो भाई जाता है तो भाई। लिख। तेरा तेरा -12 आएगा, जो बीच वाली टर्म है ना तेरी। अभी मेरा तो एक लैम्बडा आ गया, मेरे को आगे सॉल्व करने दो। वही सोचो, इतनी सारी चीजें डाल रहा हूँ फिर भी क्यों आंसर नहीं आ रहा। वही मैं सोचू कि तुम्हारा अब तक आंसर क्यों नहीं आ रहा है। तो ध्रुव तेरा कैसे मेरे साथ सेम हो गया भाई। हाँ वही, मैं सोच रहा हूँ भाई, मैं अगर तुम दोनों का सही है तो हो सकता है कि मेरा गलत हो। और मेरे को तो पता है कि मैंने अभी कुछ ऐसा हगा नहीं है। मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी तो कितनी कम होती है। वही तो। मैंने भी 6 3 12 ही लिखा है उसमें। ये ले। दो भाई, दोनों तबाही। ओ भाई।
भाई बाकी का जो मेरा आ रहा है ना, रुक जा। मेरा आ गया, पूरा फाइनल आ गया। 4 - 2, 4 और -2 और दो माइनस लैम्डा मिल रहे। वही आ रहा है, बरोबर है, परफेक्ट, मेरा भी वही आ रहा है। आइगन वेक्टर निकालना है। हाँ तो दोनों ही निकालने हैं ना भाई। अब मेरे भी 2 और -2 और 4 है। -2 और 4। अरे तूने इसके लिए श्रीधराचार्य तक लगा दिया। अरे इसका श्रीधराचार्य, अरे वो, हाँ वो मतलब वो, तू B² - 4 इसी बोल रहे हैं ना। अरे इसमें क्या है कि मैं कभी कभी क्या करता हूँ ना कि साला ट्रायल एरर करो, फिर टाइम वेस्ट हो, फिर बाद में भी यही लगाऊं, इससे अच्छा पहले से यही लगा दो। भाई तू सोच ना भाई, कितना अब ये सब कौन से यार, साला 9वीं क्लास का भी मैथ्स लग रहा है इसमें। तो उसमें क्या हो गया भाई, इसमें कौन सी देखो पहाड़ तोड़नी है। भाई अभी तू जाना भी कॉलेज में, देखना ना। आइगन वेक्टर कैसे लिखते थे भाई? लैम्बडा आई वो टाइम्स एक्स, ऐसे ही लिखते हैं ना भाई। ए के अंदर जो भी तेरा लैम्बडा है वो माइनस कर दो। ए माइनस लैम्बडा आई। लैम्बडा पहले मैं 4 वाला ले। अरे वो तो उसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जीरो होता है ना, रुक जा, मेरे को लिखने दे यार। ए माइनस लैम्बडा आई इंटू वी इक्वल्स टू जीरो। एक में से 4 गए। तो अभी क्या है, एक एक वैल्यू डालनी है लैम्बडा की और फिर हाँ मैट्रिक्स हाँ मल्टीप्लिकेशन तो हाँ हाँ। ए माइनस लैम्बडा आई करना है, ठीक है, और उसके बाद आगे करना है। पर एक बात बता, देख मैंने ये इधर देख, मैंने ये इक्वेशन बनाई, ठीक है, मान ले मेरे को ये टर्म पता चल गई, मेरे पास ये एक मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। तो मेरे को हम्म। ऐसा मैट्रिक्स ढूंढना पड़ेगा जिसके अंदर की मतलब मैं ऐसा कौन सा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा ये मैट्रिक्स जीरो बन जाए, ये ढूंढना पड़ेगा ना। XYZ लेगा ना V को, और फिर तूने 3 इक्वेशन बनेगी, XYZ को सॉल्व करेगा। एक्स वाई जेड लेना है। भाई साहब ये तो कितना बड़ा बनेगा यार। हाँ तो ऐसे दो है तो हमें दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने, मतलब दो हाँ ग्रुप ऑफ तो लीनियर। सोचना भाई, भाई साहब, 7वां क्वेश्चन। भाई मैं तो मर जाऊंगा। अबे हो जाएगा करना। इसलिए वो क्रैमर्स रूल यूज करते होंगे कि तुलना के लिए। हाँ लाइक तुम्हारे पास डिटर्मिनेंट तो है ही। याद है किसी को हाँ, क्रैमर्स रूल? मशहूर याद है। मेरे को याद नहीं। बताओ, पहले एक्स वाई जेड वाली इक्वेशन लिखो फिर बता दो। इसमें तो 3 कॉमन भी निकल रहा है। सब में से थोड़ी निकल रहे सब में से ही निकल रहा है। सब में से निकल गए। हैं। तो -2 डाल रहा है ना। हाँ देख, मेरा बना 3 3 6 3, क्योंकि देख ये, अच्छा -5 माइनस माइनस -2, यहाँ पे बनेगा -5 -3 -6, ये यहाँ पे ये गलती है। और यहाँ पे था 4 ना, तो 4 - -2, अच्छा -2 6।
एक क्रैमर रूल्स अपने को 2 के लिए अरे तो एक मेरे को मेरी बात बर्दाश्त बताऊं, करता है। तुमको एक बात बताऊं। तो अ, इसके अंदर अपने देखे ना, तो देखिए ये दोनों रो तो हम्म, सेम है, ठीक इसका है। भी सेम है भाई, सारी सीजर, हाँ यानी देखना, सारी रो ऐसे से। अगर तू ऐसे देखेगा ना, तो इसका तेरा मेरे को लगता है फर्स्ट रो आरईएफ में बनाना ज्यादा -2 आसान है। -3 आएगा। एक में फर्स्ट रो -3 तेरा आता है। क्या? पूरी मिडल रो माइनस वाली, पूरी मिडल कॉलम माइनस वाली है। ये तो हाँ, अच्छा, तो हाँ। अब तू पहली 2 रो से 3 कॉमन, नीचे वाली से 6 कॉमन। तो आई गेस आरईएफ बनाना ज्यादा आसान होगा ना। मैं तो आरईएफ बना रहा हूँ एकदम। अरे लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ, जैसे तू इसको इक्वेशन में लिखेगा तो तीनों हम्म। की तीनों इक्वेशन सेम है। हम्म। हाँ तो यानी तीनों इन की द तीनों सेंस कि इक्वेशन सेम। इसका इसका ट्राइवल सॉल्यूशन एक निकलेगा, और ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे। एक ही इक्वेशन मिलती है, x + z = y सब। हम्म। ये पूरा लीनियरली डिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना सर। तो अपने कभी अगर सॉल्व नहीं कर सकते, राइट है ना, तो अपने वो वाले फॉर्म में रख देते हैं ना, पैरामेट्रिक फॉर्म में। हम्म, तो उसको लिखने के लिए क्या करेंगे कि उसको इसके भी भाई अंदर कैसे जो आ रहा लिखेगा, है दो ऐसे इक्वेशन चाहिए ना उसके लिए। इनफाइनाइट आ जाएगा भाई इसका आंसर। हाँ आएगा तो इनफाइनाइट। अरे एक ही इक्वेशन है तो उससे कैसे लिखेगा पैरामीटर। हम्म। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। कुछ तो उसने बताया था ना कि एक ही लाइन में। हाँ वही, एक ही देख लाइन मेरे में, को वही तो ऐसा बोल लगता रहा हूँ है कि कि ये पूरा स्पैन एक इसके ही हो अं, जाएगा। इसके हाँ, अंदर कि कोई दिक्कत एक आइगन वेक्टर नहीं, भाई पूरी लाइन ही आ गई आंसर, ये सारे के हम्म। सारे। इनफाइनाइट आएगी। चलो तो दूसरा भी तो करना है। दूसरा लैम्बडा लेके दूसरा लैम्बडा 4 था ना। मैंने मैंने 4 वाले से करा है अभी तो पहला। दूसरा लैम्बडा अब मेरे लिए -2 है। -2 के लिए तो इनफाइनाइट है भाई।
मेरा तो 0 0 0 आ रहा है। इसके लिए 4 के लिए। नहीं, हाँ मैं 4 के लिए। हाँ, मैं -2 की बात कर रहा हाँ, वो तो पहले ही कर दिया था ना। था। नहीं, मैंने पहले दूसरा करा था। हाँ, तो उसका आंसर क्या आया था? मेरा तो भाई देख, वो जो ग्रामर रूल होता है ना, उसके नीचे जो डी लिखता है ना, बड़ा वाला, हाँ, वो 0 बन रहा है। अच्छा, यानी डिटरमिनेंट 0 बन रहा है। हम्म ये मैं तो सीधा तीनों इक्वेशन सॉल्व कर दी तो 0 0 0 आता है। इक्वेशन क्या बनी? -x - y + z = 0। x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, x माइनस x थ्री वाई - प्लस y जेड। + z वो कैसे बनी? क्या? -x - y + z बननी चाहिए ना। अच्छा, हाँ माइनस एक्स बनी, हाँ ओके ओके। हम्म भाई, तो आज अपना दिन अच्छा है, कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं आ रही है। ये भी आंसर तो 0 0 0 ही आ रहा 0 0 यानी क्या बोल रहा है? की वैल्यू 0, y 0, है। z 0। हाँ, Z0 आइगन वो तो, वेक्टर जो आ रहा है। लेकिन पैरामीटर में नहीं कर पाए। लेकिन तुमको पता है, उन्होंने का एक कंडीशन होती है, जो अपना एक्स होता है ना, मतलब जो अपना आइगन वेक्टर होता है ना, 0 0 नहीं होना चाहिए। हाँ वो जीरो नहीं होना चाहिए, वो एक नॉन जीरो मैट्रिक्स हाँ, होना वो चाहिए। वेक्टर ही नहीं हुआ। हाँ, तो मतलब कोई आंसर नहीं आया भाई। हम्म हाँ, यानी कि मेरा अपना एक ही आइगन वेक्टर है, मतलब एक ही आइगन वैल्यू है -2, और उसकी करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है इन्फिनाइट। कुछ कुछ ऐसा निकलेगा। जेमिनाई भैया को वो पूछना पड़ेगा। जेमिनी। तगड़ा सवाल है भाई, तगड़ा सवाल है। 7 मार्क्स के लिए तो आया है, तुम आइगन वैल्यूज तो आराम से निकाल लो। अरे उसमें भी तुम, अगर तुम लोग अपने अपने हिसाब से कैलकुलेशन करते हो तो फिर तुमको उसमें भी दिक्कत तो है ही। अरे यार, वो डिफाइन भी कर देगा पहले। फास्ट पे क्यों रखा, प्रो पे रखना। अरे यार, वो आंसर तो दे ही देता है ना, फटाक से देगा उल्टा। ये तो आइगन वेक्टर दे इसके रहा तो है भाई। आंसर, हाँ। λ4 और -2 है, वो तो बरोबर है। अच्छा, ये देख, इसने 1 1 2, फिर उसके ऊपर टी जो लिखा है ना, वो टी है कि वो हम्म, पैरामेट्रिक है? लेकिन पैरामेट्रिक बनाने के लिए वो चाहिए तो सही ना अपने। अरे, पैरामेट्रिक बनाने, देख मैं, इसकी इक्वेशन क्या है? x इक्वल्स टू वाई, जेड एक इक्वल्स मिनट टू मुझे, टू एक्स देख, x इक्वल्स टू, देख ऐसे 6 - 6, तो इसने ऐसे लिखा इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू वाई होना चाहिए इस हिसाब से। समझ में आया? R1 से -3। एक्स इज इक्वल टू वाई तो मेरा भी आया था। हाँ, फिर इसने ये दोनों जेड को, इज इक्वल टू 2x भी आया था। हाँ, फिर इसने क्या करा कि ऐसा लिख दिया 1 1 2, फिर तुम उसको कुछ भी लिखो, वो पैरामेट्रिक ऐसा। लाइक मैं बताता हूँ क्या बोल रहा है ये।
देख, क्योंकि x इक्वल्स टू वाई है, ठीक है, और z इक्वल्स टू 2x है, तो अपने z इक्वल्स टू 2x को ऐसे लिख सकते हैं, z इक्वल्स टू 2x, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। और अपने ने वेक्टर का वो वाला फॉर्म सीखा था ना, कार्टेशियन फॉर्म, याद है तुमको? ये तो पूरी लाइन का फॉर्म नहीं हुआ। हाँ, ये पूरी एक लाइन हुई ना। हम्म, तो ये लाइन के ऊपर लाई डायरेक्शन करने वन वाले बाय जितने टू। भी वेक्टर्स होंगे, वो सारे हाँ, वेक्टर्स। वो सारे। हाँ, समझ यानी में ये आया? ऐसा हुआ कि इसके साथ रोटेट किया हुआ। हाँ, रोटेट नहीं करा इन द सेंस के वो उस लाइन पे स्क्वीज हो जा मतलब रहे हैं ये सब। एक्सिस ऑफ रोटेशन थी ऐसा। हम्म। बढ़िया है भाई, ये नवा सीखने को मिला। हाँ, और फिर हमने जो पहले केस छोड़ दिया था उसका क्या किया? जी, ऑल रोज रिड्यूस टू सिंगल माइनस इक्वेशन। वाला। अच्छा, तो देख, इसका भी वही लाइन बनाया है और फिर वेक्टर ऐसे लिख दिया है, -1 0 1 ऐसा। हाँ, इसका एक इक्वेशन से कैसे लिखा इसने? अरे वो इसने सिंस लाइन वी लिखी हैव है, प्रूव फ्री वेरिएबल। वो पूरी लाइन लिखी है। एक मिनट। हेलो। हम्म। एक्स माइनस फाइव प्लस जेड तो हाँ, प्लेन का इक्वेशन है ना। since we have two free variables y and z, we find two linearly independent vectors. उसने लेट ले लिया, लेट लेट ये वाई। जीरो, लेट ये जीरो। अरे इसने क्या करा है कि आई गेस ना, इंडी मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के इसने कुछ केस ले लिए आई गेस। ये ऊपर टी लिख रहा है तो ये टी क्या है? Oh, you are correct that there are infinite number of eigenvectors for any eigenvalue, for any eigenvalue, लाइक वो पॉइंट पे जब तुम ट्रांसफॉर्म मारोगे तो वो लाइन पूरी निकलेगी। हाँ, वो बात तो उसकी सही है ना, कि कभी अपने नहीं, ट्रांसफॉर्म उसने मार रहे तो प्लेन की पूरी। इक्वेशन लिखी ना। तो हम सीधा आंसर ये क्यों नहीं देते, ये प्लेन में जितनी भी क्या बोलते हैं वेक्टर्स है अरे वो तू सारे पढ़ना, आइगन वेक्टर्स तू है। पढ़ना। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एनी पॉइंट a vector on this plane except the zero vector is a valid eigenvector. Since the planes contain हाँ, तो infinite हमें many आंसर ऐसे points ही लिखना है। in linear algebra, instead of basis for the space. In linear algebra, instead of listing infinite solution, we क्या provide a कर रहे basis of बताना for ही the नहीं पड़ता, space. तेरा तेरा कॉल आ गया था। हेलो, सुनाई दे रहा है भाई? हाँ, कब से कॉल आया था? अरे वो किसी का कॉल आ गया था, क्या करा तुमने? कहाँ से बाकी थे? कहाँ से क्या, मैं तो ये जेमिनाई का, मेरे को कुछ नहीं पता वो क्या कर रहा था कब से। अच्छा। उसकी इक्वेशन क्या बनी थी जेमिनाई की?
अरे वो ऐसा बोल रहा है कि है ना अपने बेसिस देते हैं, समझ में आया? वो जो स्पेस बन रही है ना, वो जिस स्पेस, वो जो, समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? जैसे वो प्लेन है ना, तो वो प्लेन को अपने हम्म। कोई वेक्टर के साथ, अपने को अगर वेक्टर लिखे है ना, तो वो पूरा स्पेस अपने हम्म। रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना कोई बेसिस वेक्टर से। हम्म। तो अपने एग्जाम क्या मांगती है? एग्जाम वो बेसिस वेक्टर मांगती है, प्लेन को, प्लेन को रिप्रेजेंट करने वाले बेसिस वेक्टर मांगती है। अरे हमने प्लेन की इक्वेशन ही लिख दी तो क्या रिप्रेजेंट और। अरे पर वो एग्जाम तो वेक्टर प्लेन के की फॉर्म में इक्वेशन, बेसिस मांग रही है ऐसा। अच्छा। अरे देख भाई, तो वो भी कैसे अपने लिखा को, उसने, वाई डिड देख मैं तुमको ये शेयर कर देता हूँ, ठीक है? बाकी अभी मेरे को जाना पड़ेगा दोस्तों। मेरे को भी भाई। नितिन तो अभी आ, हाँ भाई, आज तो देखो मेरे को देना ही पड़ेगा क्योंकि फिर परसों से तो मैं बाहर जा रहा हूँ। ठीक है ठीक है। देख लेना, तो अभी देना हो तो अभी देना, वरना घर जाके फिर बाद में करना हो जो करना हो तो। हाँ ठीक है। जाते टाइम देके जाना हो तो जाते टाइम देके जाना, और आते टाइम देना हो तो आते टाइम। आते टाइम तो कहाँ से, मैं क्या वो कॉलेज में ब्लेजर लेके घूमूंगा? हम्म। नहीं। कोई ना, चल अभी तो हम्म, मैं जाता हूँ। हम्म।